What the fuck is going on? Hey, fuck the intro, man. Fuck the intro. Can you guys hear me? Hello, 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 hello. Input. Hello, 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 hello. I think I'm fine, I guess. Hello, I have to check it on the phone. Or is my phone dead? I have to see. Wait. Hold. Wait, no, sorry. sorry. I just got scared that I probably licked my own stuff. Let's see. Okay, I watched my own stuff. So, hey, boys, what's up? So, let's start with something just like a little bit lame. Maybe then we can like do more good stuff, do more research stuff. Maybe, I don't know. Uh, I'm streaming for like, sorry, I have been thinking about streaming for like forever, but at this point I was wait, what the fuck am I doing? Pin note, lock note, fuck, use password. 1 second. I just was very close to leaking a very private note of myself for no reason whatsoever. Okay, so today we will do more about fuck. Oh shit, I did the outro thingy. Okay, new US. So this, okay, I will remove the Israel part from here for now at least, because again, uh, we might go over like the whole US Iran like forever war thingy, right? Like we can go from like how Shah was put in power by United States, then how the Islamic Revolution happened. Is it that what it is called? Islamic Revolution? Like how like Ayatollahs came in power basically, right? And yeah, we can talk from there. We can talk about JCPOA, that is like the Obama's deal with uh, Iran. We can talk about Trump 1, how Iran's JCPOA was torn apart. Then we can talk about things like, I don't know, we can talk about like fucked shit that Israel was doing in that area, and how October 7th happened. Again, bad terrorist attack and one of the worst casualty events. I think it's one of the like worst like terroristic casualty events in like this century probably. So yeah, it's pretty bad. What do you want me to say? And Israel started like a world war in that area, basically speaking. Some bad shit happened in 2024 or 3, when like Iran fired like a bunch of ballistic missiles towards Israel. Israel also fired like a bunch of like little bit missiles and stuff towards Iran or whatever. Then happened the 2025, the 12-day war. Is it that what it's called, right? And then the 2026 war that's going on forever, and it has no end in sight at this point of time. I don't fucking know what's gonna happen about that. Wait, didn't I turn on my light? Oh god, I'm such a fucking dumbass. Oh god. Or should I not turn on the light? Is it fine? Okay, okay. I don't know what the fuck is wrong. Okay.
Hey, hello, what's up? Wait, am I audible? I think I am. I don't know if I'm getting any comments or not. But before that, I'll watch some like chill videos. Wait, holy shit, man. Holy shit. Why am I sharing screen? Wait, stop. Uh, Do you hear the people sing, singing the song of angry men? Is the music of a people who will not be slaves again? When the beating of your heart meets the beating of your drum, life's about to change when tomorrow comes. Do you wanna join the crusade? Na 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 na. Do you hear the people sing, sing the song of angry men? Is the music of a people who will not be slaves again? The beating of your heart means the beating of a drums. Life's about to change when tomorrow comes. Wait, where is the video I'm searching? Did I forget to? Oh no, I didn't. I didn't. Oh god. This is a video about Indira Gandhi. It is made by this channel called Slice. We will watch this video. Then we will move on to other topics, more important topics, basically Israel-Iran war, Bengal elections and stuff. I don't know. There are so many bad things happening right now, and hey, there are things people talk about because of reasons. There are things that people kind of don't care about, and there are things that like just gets dug deep down, like into the like abyss. Basically, it's like the meme, sunk the sunken meme. Yeah, it's this meme basically, not this. Wait, stop. There's like the three version of this meme, right? Uh, Whatever. You can you can see this meme basically. Where is the thing I'm searching? Jesus fuck. Oh god. Yeah. This is the meme, let's say, okay? Oh. Oh, I was missing. Okay. This this kid, you see? This can you see or not? The sorry. Uh wait. This kid is Israel Palestine, okay? Everybody is talking about it. Everybody cares about this kid, okay? Israel Palestine, okay? This kid, okay? You see this kid here is Sudan war, okay? Like literally genocide going in Sudan, okay? People are dying, nobody gives a fuck. Like hundreds and thousands of people are getting affected by this. And do you know what is this? Do you know? Mass displacement of like people in my country in Assam, of my people, Bengalis,
and removal of 9 million Bengali people from the voter list of India. That should have been like the biggest news of this fucking century. But like nobody gives a fuck about it, man. Jesus fuck. Like I didn't even see like a single big news outlet covering that 9 million people are being deprived of the rights and civil liberties. Their basic right to vote that's being stripped away from them. Like in the biggest democracy in the world, apparently. Like nobody gives a fuck about it, man. Like this is really sad. Like again, this is not only about my country, and I'm just not like showing this grievances like for whatever. No, like I don't. It's not just that, right? Like people only care about like censorship or like these things. One in like tier one countries like United States, UK, France, like the European countries essentially, basically, right? Then the people care about like censorship in countries that like the tier one countries that the, which they don't like, basically. The tier one countries, when they don't like a country, they talk about the censorship of the country, like China, Iran. Like Iran has censorship from like forever, but like people were talking about like the Iran censorship from like 2025. Like why? Before 2025 was it like all good and dandy? No, like nobody talks anything about like the censorship. And like when Pakistan's military gunned down its protesters, nobody give a fuck. Like nobody give a fuck when like India's like 9 million people were like stripped away from like their like basic rights, civil liberties and stuff like that, and their names are removed from like the voter list. Nobody talks about that. And that fucking infuriates me. Like I'm not a person who kind of like to be on camera and do this shit. Like I generally have my YouTube channel to keep it as a diary, to rant about stuff and stuff like that. Like it's not for making money. I would never make money from anything regarding YouTube, because whenever I will get a bit of attraction, I'll just remove every social media platform from the face of the earth and just be like peace out, basically, because I cannot take heat from anything that's public. I have my own shit. I earn good money that I can like support myself. I'm a young person. I'm kind of supporting myself on my own right now. Slowly, I'll also support my parents, hopefully. But hey, this thing is never, or was never at least, for like fame or to like be my put my voice out there or something like that. It's more like, hey, it's a diary that I have to rant about, essentially speaking. But hey, fuck me, man. Oh god. Uh, the do you hear the people say the song of every man? Wait, I have to turn on. Hello, hello, hello. Okay, wait, stop. Oh, shit. I don't know what fucking happens, man. Like Jesus fuck. Okay. By the way, I discovered this game. Oh god. I don't even know how to play this game, by the way. But hey, let's watch this like documentary first, and then we can do watch something good. Okay. Hey, we can also cover the censorship stuff in India, right? But before that, I have to like actually like talk about what is censorship. I think what what free speech should be, essentially speaking, right? Like it's a topic we will be researching, right? I want your help, and whoever is watching, I will be like putting this out on Wikipedia if possible. uh, oh god, I made this tea and I did not put any sugar whatsoever in this tea, basically. But censorship is a thing that have been like fucking uh,
molested by the right wingers in like tier 1 countries like America and UK. Like again, like I'm not saying like they did not face any problem of censorship ever. I'm saying just like it's a different type of censorship when like your videos are being demonetized or being restricted versus your like safety is being threatened, or your like civil rights and liberties are being like taken away by the like organization that has the monopoly in violence, that's the government. Like this are different types of like censorships we're talking about, essentially speaking. I think when we're talking about censorship, we should generally talk about like the government top down thing. The private thing, we can talk about it. Again, these private organizations are, some of them are like as big as governments nowadays. Holy fuck, what the fuck is going on? Oh god. Do you hear the people sing, sing the song? Do you hear the people sing, sing the song of every man? Is the music of a people not whistling? What the fuck is going on? Is it wet? Oh god. I should buy a vape or something. Okay. These are two things I will research about, but first of all, watch this documentary about Indira Gandhi. And listen, she might be dictatorial, but like she was the dream India I wanted to live in, okay? She This is the India I wanted to live in, but hey, I have not watched this documentary, so let's watch. Oh god, what the fuck? जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून Oh fuck me, man. Fuck me. I hate streaming. I fucking hate streaming. This is why I make videos like इतना सारा cuts वगैरह नहीं करना पड़ेगा. Again, I have to like edit this anyway. का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा. October 31st, 1984. The autocratic leader of one of the world's most populous democracies
was gunned down by her own bodyguards. Sure, again, like, I don't know if it's like super fair, like at least standing in 2025, 2026, where like there is like a Dharka Mahal in like universities and stuff like that in Delhi, like in our fucking capital. Like, I don't, uh, I don't think that it's like really fair to talk like that Indira Gandhi was dictatorial. Again, she was very much dictatorial, but like she was a type of dictator that like generally speaking, even like a libertarian ass person like me, I am somewhere between a liberal and a libertarian. So like a libertarian ass person like me would even like agree to, okay, I would bite the bullet and say, hey, fuck it, I will live I live in an India in which Indira Gandhi was a ruler, okay, than like fucking BJP basically. To be honest, I'll also say like I'm probably scared if what will happen when Modi dies. Basically, these motherfuckers are like fucking crazy. Modi, at the end of the day, like he might be retarded or whatever, but like there is something going on behind the PR of Modi that like he kind of can like hold the racism and the like Islamophobia and xenophobia and stuff like that. I don't think like fucking Yogi Adityanath can. I don't think like fucking Himanta Biswa Sharma can like hold the like xenophobia and Islamophobic tropes in front of like international media. And I think if that happens, I do think like with some hook or crook they will still win elections, but I think like my country's image will be like further like maligned by these forces. But hey, what can we do about it, eh? As long as little green men with guns can come to our polling booth and oversee our elections, like Russian green men entered Crimea and did the elections there, I think India is on the right path. I think India is on the right path, correct? Within hours of her death, her son, Rajiv Gandhi, was sworn in as her successor. भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज हत्या हो गई। ये मेरी ही मां नहीं, वे देश भर की मां थी। उन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद तक देश की सेवा करी। Again, when it comes to domestic policies, when it comes to like liberal values and like the what's the word, like the humble, not humble, that's not the word I'm thinking about, like the down to earth, that's also not the word I'm thinking about, benevolent, that's what I'm thinking about. The benevolent leaders like fuck, what's the name, Manmohan Singh, sir, Manmohan Singh, um, like benevolent leaders like Manmohan Singh who like hardcore like respected the values of liberalism and stuff like that are good, generally good for the economy or stuff like that too. But sorry, when it comes to foreign policy and India's like image portraying towards the international community, I would like 100 out of 100 times I'll choose Indira Gandhi over any fucking prime minister that ever existed in India and probably will ever exist like in the current foreseeable future in India basically. "33 years after her death, Indira Gandhi is still remembered, revered, and reviled, almost in equal measure. Indira Gandhi was always the prime minister. Suddenly, Indira Gandhi assassinated, and that too, in that brutal way. This is Sagorika Ghosh. She's a TMC. Is she a MLA or was she a candidate? I don't know. She is like a part of the TMC, like my states.
ruling party essentially. I don't know if they will be ruling anymore after 4th of May. Yeah, May. Uh, God fucking knows. Especially because little green men came in our polling booths to monitor the elections, and 9 million of our people were stripped away of their civil rights and liberties. But hey, who fucking cares, I guess. LOL. So this woman also wrote a book called Why I'm a Libertarian, a Liberal or something like that. I have that book. I don't know where the fuck it is right now. I cannot find it right now. 90% sure. Oh, there is a book. There is a book. Can you see? Why I Am a Liberal, Sagorika Ghosh. We can read this book today if we are like streaming for a long time. And she was dead. And for me, it was really like a shock to the system. I was horrified because I don't believe assassination is the way forward for anyone, you know, because assassinations Wait, who is this woman, Sasi Tharoor? Oh God. make any even mediocre leaders in. This is a fucking, I don't know, man, like a neoliberal pro-fascist kind of person who is now like surprisingly anti-BJP for some reason. She's a weird person, okay? Like, I don't like this bougie fucking people, like, who has no fucking connection with the, like, fuck, I hate this woman, okay? Tavleem Singh, not good. Not good. We don't like them, okay? Heroes. And that assassination made her into a saint almost. No other Indian leader comes close to evoking such contrasting reactions. To the faithful, Indira Gandhi was a strong Democrat who kept India's interests above everything else. True. To her Yes. enemies, she was an uncaring autocrat who imposed her will on the public. Indira Gandhi was a very complex What the fuck is happening? person. There were two sides of hers, and you see that most accounts of her life are Kumi Kapoor, I don't know what the fuck this is. either very adulatory or very negative. I think she was a mix. Indira Gandhi, when she first came to power, I remember this face. I think this person is like from BBC. I have seen something. This is triggering the fuck out of me, by the way. Strongly Should I turn it appeared off? and was I think- very insecure. She became somewhat more secure, but I don't think she was ever the secure person that some people like to portray her as, you know, the Empress of India, the Iron Lady. She was. As India's first and only female prime minister, Indira Gandhi served 4 terms and ruled with an iron fist. She was a dominant figure in Asia for almost 2 decades. I want to transform dreams into reality. But I don't think we can exist without dreams. I don't think we can exist without vision. She was Nehru's daughter. And Wait, am I hiding her face? Oh God. Why am I hiding this queen's face? I am just a nobody. What the fuck, man? Nehru was a colossus. Nehru, by the time Nehru's daughter, Can exist. I want to transform dreams into reality. But I don't think we can exist without dreams. I don't think we can exist without vision. she was Nehru's daughter. And Nehru was a colossus. Nehru, by the time he died in 1964, was a giant. He had been Gandhi's lieutenant, he comes through the freedom movement, he was prime minister for 17 years. So Nehru's daughter was almost like a queen, literally like a princess.
So she carried the mantle of Nehru's daughter very, very strongly with the people. Women leaders in India are viewed at differently from women leaders in the West because of this whole concept of Shakti, Durga, goddesses of power. Oh yeah, that's cringe as fuck. Sure, whatever. If a woman gets to that threshold, then she is looked upon with great veneration. True. Born in 1917 to Jawaharlal and Kamala Nehru, Indira was a child of India's freedom struggle. She was often described as a shy little girl who was purely her father's daughter with no political ideas of her own. In those days, turn of the century Indian family, the eldest child of the eldest child should have been, according to tradition, a male. While she was growing up, her mother used to dress her as a boy, and her father used to always refer to her as Indu boy. So she was... Okay, I don't really give a fuck about like people like obsessing about people's personal life, at least like political leaders' personal lives. I generally don't like that because like people are people, okay? We do not have to fictionalize them. We don't have to like talk about them. That's not what they are known for. They are known for their work and stuff. Like they are fascinating figures, and I think like the fact that we know them like begs the question, or rather like tells us that like they have done something to or for us to care about. It's not just like what they're it's not just that like what their parents called them or something like that, right? The girl Indira. She was the girl boy, Indu boy. That kind of gender ambiguity of being girl and boy and man and woman and Indu boy, I think stayed with her all her life. Married in 1942 to politician and journalist Feroz Gandhi, much against her father's wishes, Indira harboured an interest to join politics. So Nehru had a bit of a problem with Feroz Gandhi, and Nehru was not approving of her marriage, but almost as an act of rebellion, she married and moved in with Feroz. But it was interesting that she married Feroz in 1942, and by 1947, 5 years later, she was back in her father's house as her father's hostess and making inroads into politics. She was always very, very politically ambitious. Okay. But she would have to wait until 1959 for her political career to take off, when she was elected Congress Party's president, a major turning point. And soon after her father's death in 1964, she was appointed as Minister for Information and Broadcasting in Prime Minister Lal Bahadur Shastri's cabinet. She had the head start in the fact that she was the daughter of Nehru, and she was chosen as a compromise candidate by the old guard in the party because they thought mistakenly that they were in a position to control her. They thought this young woman can be easily manipulated, and how wrong they... I'm sorry. Like, give me 2 minutes, okay?
I'm back, boys. Should I do violet? Maybe blue? This? No, this is too strong. Yeah. This is cool, right? Okay. This happens whenever I stream. I cannot find anything that I fucking need. And holy fuck me, man. Okay. Done. Cheers. Hello, 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 hello. And how soon, within 2 years, she had swept the whole old guard away. If political power was at stake, if the power of the Congress party was at stake, Indira Gandhi didn't give a fig for constitutional. Wait, this is a game I kind of found out very recently. Let's play this game for now before like actually talking about like things I will talk about today, basically, right? Let's go, boys. I don't know what the fuck this game is, by the way. For her power was important, and the survival of the Congress and the supremacy of the Congress. So that's the kind of politician she was. Both Nehru and Firoz were not very positive about her entering politics. You know, it was not easy for a politically ambitious woman in the 1950s and 1960s to make an inroad into politics. The most important date to me in Indian politics is 11th January 1966, which is the date that Lal Bahadur Shastri died. When the incumbent Prime Minister Shastri died unexpectedly in 1966, Indira was pitted against fierce nationalist Morarji Desai in a tough battle for the leadership of the nation. She won. Her victory heralded the beginning of a remarkable political chapter in Indian history and the Asian century. She'd be the Gungi Guriya, the dumb doll in the front, and the powerful men of the Congress would rule from behind. But the Gungi Guriya turned out to be the nemesis of the old men. So under that quiet, docile exterior that she presented, very strategically presented, was a powerful political brain. Very soon, Indira would make the world sit up and take notice. She'd become one of the most formidable prime ministers that the Asian century has ever witnessed. Srimati Indira Gandhi from the primary membership of the Congress for deliberate act of defiance of the decision of the working committee. In 1960... Okay, basically what happened, like, she separated from the party and made her own party, essentially, right? Indira Gandhi's political fortunes changed dramatically. She was expelled from the Congress party for defying rules. Undeterred by her expulsion from the party, Indira Gandhi formed her own rival faction. True. 446 of Congress's 705 parliamentary members deserted to join her group. A milestone in not only her political career, but the Asian century. Indira Gandhi had come into her own. She had split the Congress, and she had made the Congress entirely about herself. She became supreme leader of the Congress. She was able to create a party entirely in her own image. In the 1971 Indian general elections,
The biggest democratic poll in history, 150 million people voted in 540 constituencies. The result? A National Congress landslide. With a tremendous mandate, Indira, the woman, rather than Congress, the party, was the victor. Indira was unassailable. She had established herself as a very strong prime minister. I think people like that. A strong prime minister somehow seems to resonate more than a democratic prime minister. She was very cautious about... Oh God, that was such a true statement. Okay. What she said? A strong prime minister somehow seems to resonate more than a democratic prime minister. Sadly, in this area where like people don't have anything to live about or enjoy about, like these are not like ultra powerful countries. I'm sorry, but yeah. Yes. Like you can't even like, I don't even blame like the Modi fans that like thought that like I don't think they had evidence to believe that, but like that thought that hey, like Modi came in power and we would be looked at internationally in a good light, or like people will respect us. Like that's a good like motivator in at least communities like this. Like yeah, it's the truth, man. She was very cautious about anyone she thought might possibly be a rival to her. And that gave the impression that she was authoritarian. But I think that authoritarianism came mainly from the fact that she knew the sort of skullduggery which went on in politics. She knew that she had a lot of ambitious people all around her, and she knew that she either had to keep them on a very, very tight leash, or someone would be there trying to overthrow her. She was so totally in control of her party. She made her all power into her own hands. She became the president and the prime minister, president of the party, prime minister of the country. So basically, she allowed nothing to anyone. Soon after her party's landslide in the general elections, the plight of East Pakistan started dominating Indira's attention. Mustn't you, in effect, face the question? This is a thing I will like thoroughly research. Sorry, this is a thing I will thoroughly research and talk about in some video in the future. I will research about like Bangladesh's liberation and India's like what's the word? India's like contribution towards it, right? Hey, I got this ring by the way. It's nice, right? Not the Ma one, this one. Yeah, it's the Ashok stump. Yeah, that's what I'm. What the fuck is? Okay. There will be like videos in which I'll research about Bangladesh and Bangladesh's liberation and stuff like that. I'm not understanding what the fuck is this game, by the way. Yeah, because that's like a rabbit hole like a lot of people don't know, and I don't, to be honest, like I have not found like good like videos talking about that like till now, to be honest. Yeah, so I think I can do a good job in researching about that and talking about that, but hey, I should have to get time to talk about that. I don't know what the fuck is wrong with this fucking light. This is like boom 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 boom. Bro, kill yourself, man. Fuck. Having to reduce your support for the guerrilla armies operating in East Pakistan. Does that mean we allow a massacre to continue? What happened first? True. How many people were killed? The massacre began long before there was a single guerrilla. Pakistan was created as a country with two wings during India's partition in 1947. Now, 24 years later, it was about to self-destruct. Sheikh Mujibur Rahman, a charismatic leader from East Pakistan, led the movement for self-determination for what was to become independent Bangladesh.
This movement led to a very brutal crackdown by the Pakistan army, and a lot of people were killed. The army then fanned out and into all the corners of East Pakistan and established very brutally a military rule there. Yeah. As a result, of course, millions of people fled and became refugees in India. The influx of Bengali refugees was creating a huge financial burden for India, costing more than 55 million US dollars, a price that India simply could not afford to pay. What does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? Jesus. And say that, Chill out. we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. Indira Gandhi supported Mujibur Rahman by talking about the plight of East Pakistanis during her foreign tours and called for the liberation of Bangladesh. She became convinced that a military face-off with Pakistan was going to be necessary, given the fact that there were refugees pouring in, 10 million refugees at the height of the crisis. She visited the refugee camps. She was very moved by the sheer brutality of it. Children whose eyes had been gouged out, women's breasts had been hacked off, seeing the horror of what was happening to them. She was motivated by the fact that this was a just cause. Essentially, in March, when the Pakistani army cracked down and the flow of refugees came in, Indira Gandhi asked the army and Field Marshal Manek Shah to go in to Bangladesh, where Field Marshal cautioned her, saying that the timing, the weather, nothing is conducive at this point in time. And give us 6 months to 8 months, we'll prepare properly. And Himalayan passes are blocked, so the Chinese can't interfere. She listened to General Manekshaw. When the time was ripe, he had everything ready. The troops were there. The passes were closed. Chinese could not open a second front against India. So we only had to deal with West Pakistan. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfield in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. I don't know. Pakistan bombed the western bases. And she said, well, thank God they've attacked. Wait, is my stream going on or is it stopped and I'm just talking on my fucking own? And my... oh, God. Wait, I have to cut it. I'm so sorry. Wait, stop. Guard in the party because they thought mistake. Pakistan started dominating Indira's attention. Mustn't you, in effect, face the question of having to reduce... Oh, shit. What the fuck is even that? Oh, God. Fuck no. Hold on. I cannot, man. Whenever I stream, something or the other keeps on happening, and it's like, bruh. I got logged out of every. Shut up! Sorry.
What happened? Do you know? Like all my YouTube accounts just got like signed out for no reason. Like I don't even know what the fuck happens. I'm sorry. Should I cut it and like start like I don't know, man. Fuck. Oh God. Do you know what I'm doing there? I'm just putting my fingerprint. Like, I hate Mac, you know, like, I should go to Windows and stuff. I fucking hate MacBook, yeah. Wait. Wait, what the fuck just happened? Wait. She addressed a rally at Ramlila Maidan, where there were fighter jets circling overhead, and she said, "Not by a single step will we move back." And just at that time, the news broke that the United States sent the 7th Fleet, the nuclear warship, into the Bay of Bengal. The 7th Fleet had started coming from the US into Indian waters. So this was an attempt to terrorize India. True. Lieutenant General Kuldip Singh Brar, commanding an infantry battalion, was in the first batch of troops who entered Dhaka on the morning of the 16th of December 1971. Joining the Indian Army was the Mukti Bahini, a Bengali guerrilla resistance movement that became part of the Bangladesh-India Allied Forces fighting West Pakistan. They gave us information, intelligence. We did not know where the Pakistani troops were, where they were located, where they were hiding, where were their defenses. We got on the outskirts of Dhaka, and we were waiting there and hearing on the radio General Manekshaw giving ultimatums to General Niazi to surrender. It was the second largest surrender after the Second World War. It was an astounding military achievement and an astounding diplomatic achievement. And there was no stopping her after that. All the world admires a deed well done. And I think, with all modesty, we can say that we have done this action well. And the idea of dismembering Pakistan, and very important idea of actually disproving the two-nation theory. She was very, very conscious of this two-nation theory that Hindus belong to one country and Muslims belong to one country. It's was not the good. legacy of partition. True. Which she rejected, and her father rejected, and Mahatma Gandhi rejected. It was in a way a chance to avenge what happened in partition, what humiliations had been heaped on her father by the creation of Pakistan. The victory anointed Indira Gandhi as a tough-minded politician. She had vanquished Pakistan as a lone woman who refused to be bullied by the US. She raised the stature of India internationally. India, under Indira, could now no longer be treated as a lesser country. The Indo-American relationship at the time of the Bangladesh War was extremely bad. There was bad relationships between Nixon and Indira Gandhi, bad relationship with Kissinger as well. True. And they were backing Pakistan. That's one of the main reasons, of course, why she then signed the Treaty of Friendship with the Soviet Union. Yeah. And thereafter, India remained close to the Soviet Union. America, in the days of the Cold War, took the attitude that if you're not with us, you're against us. But I think she managed to preserve her own freedom in foreign policy. After the 1971 Bangladesh... Like, this is the reason, like, even though she was a pretty inarguably dictatorial leader, like, everybody, including liberals, like this person, okay?
War, she was goddess. She was Abhinav Chandi Durga. I mean, think about it. Stop. The whole world is against you. Europe is against you. England is against you. America is against you. You go to America to ask for help. Nixon calls you a witch. It was the United States, China, Pakistan, and India alone. Just this one woman, Indira Gandhi, alone. The road ahead is still long and very steep, and we have many peaks to scale. The 1971 Bangladesh war was over in 14 days. It's never happened in the history of the world that a new country has been created in 14 days. Indira Gandhi was now at the very zenith of her popularity and invincible. So deep was her belief in her own invincibility that she was soon to unleash the unthinkable on a country founded on democratic values. On the morning of June 26, 1975, a hammer blow struck Indian democracy and reverberated throughout Asia. The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. I was woken up about 3 or 4 o'clock in the morning, I suppose, by a friend of mine, and who was a journalist. He said, get up, go to Reuters and see the PTI ticker. Something enormous is happening. And there on the ticker, the news was coming. The JP had been arrested. Chandrasekhar, another important leader, had been arrested. Morarji Desai had been arrested. We still didn't know why, but we knew that there were arrests. In fact, I remember then phoning up my chief reporter and saying, can you send the office car and I'll make a round of all the places and we can do a story. So I put out a story on the air by about 5 o'clock in the morning. And that, of course, annoyed the government intensely because the story went out before the cabinet had approved the decision. And that was one of the reasons why the government became so hostile to the BBC and to the foreign press in general. About that. The state of emergency. I didn't know about that, by the way. Emergency suspended political freedoms and gave Indira Gandhi near dictatorial powers. I thought that she was a really evil dictator. What the and fuck? she was. And she Fucking lynching, man. was directly involved in crushing institutions like the judiciary. The judges were sacked. The media journalists were jailed. Political parties were abolished. On the day the emergency was declared, the person who was very close to Mrs. Gandhi, called Muhammad Yunus, picked up a rumor that I had reported that one of the most senior cabinet ministers had objected to the emergency and resigned. So he rang up the information minister in the Gujarat and said, get hold of Mark Tully, give him a good beating and arrest him. What the fuck? Gujarat Wait, what? said, I can't do that. I must first check. He found that there was no such report, and so I wasn't beaten and put in jail. But that was evidence of the sort of hostility there was and the tension there was. What prompted the emergency was the Allahabad High Court judgment on June the 12th, convicting Indira Gandhi of electoral malpractices. The judgment debarred her from holding any elected post or contesting election for 6 years. Well, the court judgment was in a very small matter that one of her assistants, who was paid by the government, had actually done election work for her, which should have been only done by people paid for by the party. There were trivial charges. The Times London said this is like dismissing a prime minister for a traffic offense. Dismissing her for a parking ticket. It was the most challenging period of governance in India ever. There were strikes, there were food riots, there were shutdowns, there were industrial protests, there were killings, there were food agitations. India was convulsed because of the fact that the rains failed and there was economic catastrophe. Adding fuel to the fire was the mass movement launched by prominent political leader
Jayaprakash Narayan. He called for Indira Gandhi to resign and for the military and police to disregard unconstitutional orders. Became corrupt and oppressive and inefficient. The Jayaprakash movement had built a tremendous head of steam. And there were people surrounding Indira Gandhi, including her son Sanjay and the Siddharth Shankar Rai of West Bengal, who told her that, look, the situation is getting out of control. As a result of this judgment, you have to step down from being Prime Minister. And I believe Jagjeevan Ram, who was an acolyte at that time, said, Madam, you know, if you want to resign, you can resign, but please leave your successor to us. That's when a hard glint came into her eye, and she sensed that her survival was at stake, and that if she resigned, they would not let her come back ever, and that her political career would be over and the house of Nehru Gandhi would be finished. So self-preservation was very important to her. Pursuit of power, very important to her. Repression during the emergency turned the spotlight on the darker side of the Indira persona. She moved from being a goddess in 1971 after her decisive victory over Pakistan to becoming a dictator intolerant of dissent. It was the darkest hour of Indian democracy. For 22 months, India was not a democracy. Nehru's dreams of constitutional democracy were buried by his own daughter. Her son, Sanjay Gandhi, unleashed a reign of terror. Under the banner of city beautification, he ordered forced evictions of the most vulnerable members of society. Sanjay was the man behind much of the conspiracy and what was happening. He had some tremendous control over his mother, and her sympathizers always make out the point that it wasn't her, it was him who was behind it all. But I don't think it can be that simple that all the blame can be put on Sanjay. Indira Gandhi knew very well what was happening. She handed the country over to her son. He could sack ministers. Everything was his idea. His friends were brought into roles of leadership. The Turkman Gate, which was a Mughal basti, a residential area from Mughal times, was just flattened in, bulldozed. पहले तो हम अपने घर में ही थे। बहुत जब शोरगुल की आवाज आई तो हम निकलने की कोशिश करी। सीआरपी ने सबसे पहले गोली चलाई यहाँ पे। सीआरपी आई थी और उन्होंने घरों में घुस कर जो लोग घरों में रह गए थे उनको घर में से निकाला। ज्यादातर जो ज़ईफ थे वो भाग नहीं सकते थे, उनको बाहर निकाल के उनको पीटा। उनको पीटने की जिनकी उम्र 70 साल की 75 साल की थी, उनको पीट कर यहाँ से ले गई। हमारी यही सामने गली के अंदर एक लड़के के गोली लगी, वो सामने आकर गिरा। समझे नहीं, कुछ बुढ़े ज़ईफ लोग भी जो कि जख्मी होकर सामने से चले आ रहे थे। यही शोरगुल बहुत ज़्यादा बरपा था। यहाँ तक कि ये हुआ कि शाम तक कुछ लोगों के मकानात बुलडोजर लगाकर तोड़ दिए गए। उसी वक्त ही शाम को यहाँ पे कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। भाई यहाँ पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा रहेगा। तकरीबन 72 घंटे का टाइम यहाँ पे कर्फ्यू लगा रखा। It was the forced sterilization campaign that took Indira's wave of terror to a whole new high. The police started using high-handed methods of forcing poor people to undergo sterilization, which obviously nobody wanted to do. School teachers were deprived of their salaries if they did not motivate people to get some sterilization figures completed. कोई एक इलाके से दूसरे इलाके के अंदर आन के छुप के औरतें खड़ी हो गई हैं तो उनको भी पकड़ कर ले गए। नसबंदी का तो इतना जोर था कि बस कुछ बतलाया नहीं जा सकता कि कितना जोर था। समझे नहीं, जो मजबूर थे हाथ जोड़ के औरतें गई हैं, लेकिन नहीं, फिर उन्होंने एक लालच देना चालू करा कि हम 300 रुपए और कुछ और प्राइज मतलब ऐसा देंगे कि जिससे कि तुम लोग खुश हो जाओगे। Men were dragged away from cinema halls, dragged away from bus stops, dragged away from school, put into vans, taken to sterilization centers, sterilized.
And the sterilization campaign was so brutally successful that it actually overshot its targets. The poor, the downtrodden, the poorest of the poor, the tribals, the Adivasis, the poor Muslim communities, they were the ones who were dragged off and sterilized. Sanjay Gandhi was very authoritarian and very close to Indira Gandhi, and Indira Gandhi listened to him. And Sanjay Gandhi believed really that the way you run the government was to just bark out orders and tell people to go and do things regardless of procedures or regardless of anything, really. Oh, I On the didn't know 21st about of that. March 19... Oh, I never heard about that. Oh God, this was so bad. Jesus. What? How did I not know about this? At all, ever. Oh God. Oh God. 77. After 22 months of repression, Indira lifted the emergency and called for elections. Indian Express broke the story that she's going to lift the emergency. And we still didn't believe it. I mean, why would she do it? What happened was that Indira Gandhi was under tremendous pressure from international pressure as well about the emergency. She didn't like the fact that her reputation was being tarnished by the emergency. Many feared that this was the start of a dictatorship. But it is very fortunate for us, and she pulled back. Whether she did it totally out of the right reasons or whether she thought she could legitimize her rules is not clear. It's very important to remember the emergency, the election was held under the emergency. So she had the emergency powers to alter the constitution, you see. And that, to me, is the key. That's why I believe that she could well, I don't say absolutely would, but she could well have used an election victory to justify a presidential form of government. In the 1977 elections that followed, Indira suffered a humiliating defeat. Both she and her son Sanjay lost their seats in parliament. Down, but not out, Indira made a dramatic comeback in the 1980 elections, mainly due to a weak opposition that could not hold it together. I think part of the reason she came back was because of the quarrelling within the Janta government. The tragedy of the Janta government was that from the very outset, there was an argument between the three top leaders over who should be the prime minister. And so there was this internal discord. The government was inherently unstable. At the same time, Indira Gandhi played her cards very cleverly, and generally a feeling really among people that the Janta Dal was incapable of governance, and therefore we better go back to Indira. Indira Gandhi's politics would soon strike at the very heart of the Sikh religion and cost this giant of the Asian century her life. Operation Blue Star was a disaster. Operation Blue Star was not really, no? Do we think that Operation Blue Star was a disaster? Do you believe that? June 1984 was a pivotal time in Indira Gandhi's landmark career. The Sikh religion's holiest shrine, the Golden Temple in Amritsar, Punjab. I mean, I guess if you say that, hey, it was a big fucking intelligence failure that... what's the name of the guy? I'm high right now. Fuck. Jarnail Singh Bhindrawale, this guy. Like, you can say that was a big fucking intelligence failure that Bhindrawale was able to not only
I don't know how to like reduce the flare of this. I want to get my face lit, but I don't want to get like the white flares from this area. Fuck. So you can say that there was a big intelligence failure, that Bhindranwale was fortifying the Amritsar temple. I They were like taking machine guns and stuff like that in the temple and stuff like that. Like you can say that, but saying that like the Operation Blue Star was a failure, I don't know if I would agree to that necessarily, because end of the day, uh, Operation Blue Star ended up successful. Not mass people died. There was no mass casualty event happened when this happened. Bhindranwale died. He got like he got killed and then got captured. His body was found. So essentially, you can say like the whole motive or the reasons why the like operation happened was successful, right? I don't know if the other argument is that strong to be like you can say that that was an intelligence failure that happened in the first place. It was also like a bad thing that Bhindranwale was led to grow by different factions in the Congress party, uh, to basically to challenge or to question the power of the Akali Dal at that point of time. You can say all that things, but to say that the Operation Blue Star was a failure is a little no, I don't agree to that. Basically saying like, I don't agree to that. I don't know, I can be wrong. Was turned into a killing ground. Operation Blue Star was a monumental mistake. Operation Blue Star, one of the most extraordinary battles in military history, came to a head when Indian army tanks pounded the Sikh temple, the Akal Takht, with explosives to flush out militant Bhindranwale and his men. Bhindranwale was a plant by the Congress Party, really. A plant. True. Yes. Again, like a lot of people don't know this. Yes, that's true. Bhindranwale was basically like a Congress. Was a Congress. Basically, Congress tried to like question the like stronghold of like the Akali Dal. Basically, that's why they threw whatever they had in their hands, essentially speaking. Sure. Who got out of control. Basically, that's what really happened. Because the Congress Party wanted to have a Sikh leader who could have a religious status up to stand against the Akali Dal as the Sikh religious party. Yes, yes. Jarnail Singh Bhindranwale was much revered as a prophet. In December 1983, he moved into the inner sanctum of the Golden Temple, demanding the establishment of a Sikh homeland, Khalistan. Oh God. Indira Gandhi had originally seen Bhindranwale as a valuable political ally because of his popularity. Is India available? Let's see. He became a Frankenstein's monster, which in the end devoured the Congress. She was not able to control him. But it was the Congress which was playing this kind of politics of soft Hindutva within Punjab. It was almost as if she was letting the situation get worse. On the buildings in the south, By June 1984, the scene was set for a final terrible showdown with Lieutenant General Brar heading the Indian Army operation. I sent my officers to carry out a reconnaissance from various buildings outside the Golden Temple to get some idea as to what's going on inside. General Brar chose my battalion to lead the attack into the Golden Temple in Amritsar. Take the terrorists live or kill them, confiscate their weapons, and remove them from the premises of the Golden Temple. We were announcing on loudspeakers, we said, please surrender. You've been encircled. We're going to come in. We know there are a lot of innocent people inside. There are pilgrims inside. We don't want them to die. After some time, 15, 20, 30 people came out, pilgrims. They told us they're not going to allow the others to come out. They've kept them there as hostages. As tanks and troops enclosed the complex, the operation codenamed Blue Star had begun. The siege of the temple
was underway. 5th of June at 10:30 at night was the time of attack. We were to follow on foot up to the main entrance of the temple. It was all dark, pitch dark, because the electricity was cut off. All the other things was under curfew. There was not a sausage on the roads. We then followed it, the tanks, behind their protection, because we were being fired at from the Golden Temple in those defenses very fiercely. The army seriously underestimated their opponents. ਇਹ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟੈਂਕ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਟੈਂਕ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮਰੇ 4 ਸਫੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸੜੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸੜ ਗਏ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ The confrontation was the climax of a 9-hour, grueling battle between the Indian Army and the heavily armed and well-trained followers of Bhindranwale. Bhindranwale was killed inside that Akal Takht because later on, early morning, 5 o'clock, 6th, General Barar took permission from the government to bring in tanks inside the temple. A very difficult order to give when in the heat of the battle, when the soldiers are seeing their comrades being butchered, falling on the pavement, and you can't do anything in return. I think it's one of the most difficult operations that can ever be carried out. We fired at the Akal Takht, all the debris which fell and all the machine gun fire aimed at the Akal Takht, that killed Bhindranwale inside. And when I entered on the 6th during the day to retrieve his body, he was lying dead with all gunshot wounds all over his body and all lacerated wounds because of the debris which had fallen from the Akal Takht. Eventually, the operation was over by around 8 o'clock in the morning. And there was suddenly quiet. We couldn't hear any firing taking place. Yes, like you could say that that was a big intelligence mistake, that was a big political mistake to let Bhindranwale do the thing that he did, but I don't know if we have evidence enough to say uh, that was like operational failure. uh, if you're talking about the Operation Blue Star, essentially speaking, 1984, we are not like the whole world don't have like fucking special forces, especially India. We don't have special forces back then. Again, not to shit on my own country too much, but like Indian special forces is still not known for their efficiency or something like that.
like in the last like Dubai police show or something like that, then the NSG commandos came worse like rankings than the female like Chinese SWAT team or something like that, right? It's sad, right? Like Indian special forces are not known for their like efficiency. So India did with whatever things that they had. I generally don't think that the Blue Star Operation Blue Star is like a bad thing or something like that, right? It came 62 in 900. It came 62 in 109 teams, essentially speaking. Okay. It was an act of shocking desecration. You know, you go in to the holiest place of worship. Think about it, the holiest place of worship. It's like sending tanks into Mecca. The tragic story of the siege was far from over. Operation Blue Star left deep wounds amongst Sikhs. Beant Singh, Indira's bodyguard, visited the Golden Temple immediately after the operation and was deeply shocked at what he saw. Outraged, he began to plot Indira Gandhi's assassination. मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं. Prophetically, Indira Gandhi foretold her brutal demise in her last ever public speech, delivered at Orissa just a day before her brutal assassination. और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाए और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा. This was the seat that she was to have used for our conversation. Indira was assassinated in her own garden by her 2 Sikh bodyguards. उन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद तक देश की सेवा करी. I was horrified because I'm actually, you know, even if I'm not a fan of a politician, I don't believe assassination is the way forward for anyone, you know, because assassinations make any even mediocre leaders into heroes. And that assassination made her into a saint almost. When Indira Gandhi's brutal death was announced publicly, anti-Sikh riots broke out immediately in Delhi and spread to other parts of the country. 100 आदमी 50 आदमियों की जुट मारने के लिए अब हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं आए जैसे आए किसके हाथ में पेट्रोल किसके हाथ में तेल किसके हाथ में टायर किसके हाथ में कुछ लाठी फरसे दंगे मैं क्या बताऊं कुछ नहीं बता सकता. Amarjit Kaur, pregnant with her youngest child, and Gopi Kaur witnessed their husbands being burnt right in front of their eyes. A day after Indira's assassination, violent mobs had started attacking Sikhs in the women's neighborhood. जैसे बैठे थे ऐसे ही निकालो झुग्गी में अंदर बैठे थे हम लोग बाहर निकालो किसे बाहर निकाले ऐसे बालों से पकड़ा कहीं पगड़ी गई कहीं कुछ गया कहीं कुछ दे 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 हम चिल्लावे रोवे
क्यों मार रहे हमारे आदमी को? हमने क्या कसूर किया है? हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो नहीं मारा इंदिरा गांधी को। जिसने मारा उनको मारो जाके, उनको हमें क्यों मार रहे हो? घरों को में आग लगा दी, घर जला दिए, आदमियों की जिंदगी हमारे सामने जलाए, आदमियों को तड़पते रहे। बताओ, तड़पते रहे। जब बाहर मीडिया वाले सारे पुलिस वाले हाथ जोड़ जोड़ के भाई बचाओ, हमारे आदमी को बचाओ। जो नेता जी कुत्ते नेता के मारो मारो, सरदारों को मारो, निकाल निकाल के मारो, लेकिन बच्चों को जलाओ। ये बच जाएंगे सांप में, ये बच जाएंगे फिर काटेंगे। जला दो सालों को, जला दो। मारा मैडम, मार के पेट्रोल डाल दिया ऊपर, ऐसे जल रहा है मेरा आदमी मेरे आंखों के सामने। मैंने देखा, किसको छुड़ाऊं? किसी किसी को बयान दे, हमारा कलेजा जलता है, हमारा कलेजा जलता है, हमारे जख्म बहुत। हमें न्याय कौन देगा? और कुत्तों को क्यों नहीं मारते जिन्होंने इतना गुनाह करा है? इतने बंदों को मारा, सरदारों को, इतने छोटे छोटे बच्चों को। Secularism was her life's mission, and secularism was her life's greatest failure. The kind of religious riots that broke out after her death really showed that she had been unable to create secularism in India. She had been unable to create a distance between politics and religion. She had been flirting with religious extremism. What happened in the riots was that you saw a kind of vicious side of the Congress party. It was organized. It was a pogrom. It wasn't a riot. There were bodies lying in the streets of Delhi. They had to burn them in the streets. 3,000 people, were killed in 2 days. And they were all Sikhs. When a riot happens, both communities die. In Delhi, there were not one Hindu was killed, right? So this was organized by the Congress party, and the police was complicit. Okay, that's not true. It was not organized by the Congress party whatsoever, but yeah, they just was like, yeah, fuck you. But it's a sad reality in this part of the world, like individuals are not seen as individuals. They're seen as like the community they belong from. They are seen as in like religious, ethnic lenses, and somehow each individual, each man carry the guilt of every person from the ethnicity that committed a crime or something like that. Like, that's sad, that's just sad. It was a very, very clear pogrom. Yep. Today, it was more than 3 decades after her death, Indira Gandhi's legacy is still imprinted strongly on India's consciousness. I think to this day you have a press which is very fearful and very subordinate to the political authority. The kind of sackings of editors, the manner in which the press in India is treated today is very much a legacy of the emergency and continues. The legacy, that she's left behind of dynastic democracy, terrible failure. It's a disaster. At the time that she ruled were India's 2 most wasted decades. She was not a very decisive person. The emergency came because she had let the movement against her go on without taking action about it. And of course, the assault on the Golden Temple, which led to her death. She had allowed the Punjab crisis to drift and only took extreme action at the end. So I see her as a woman who didn't take action until she was driven into a corner. My final verdict on her is incredibly attractive personality of tremendous bravery, tremendous style, tremendous personal charisma. But the politics she played and the way she played that politics, to me, was very, very damaging to India. So I think there's a duality in the way I see her. I see her as a very seductively attractive person. But as a politician, I believe she was damaging to India in a very fundamental way. The world's longest-serving female Prime Minister, Indira Gandhi, ruled an almost ungovernable nation. Political strife was a constant companion. Indira Gandhi rose above all this, establishing herself as one of the most formidable political leaders the Asian century has ever witnessed.
Okay. Now let's talk about something good. Wait. I'll be back soon. I don't know the fuck is happening with this. Hey. These are chips, crackers, whatever you wanna call them. Okay. I'm turning that off because I don't know if that is doing anything. Okay. Hey, hello, what's up? This is the Malik. Let's go. Okay. What should we do now? Should we start reacting on stuff, or should we like watch some other stuff before starting to react? Let's react to like let's react to something else first. Delimitation or something like that. What should we watch? Some good documentary. Give me one, man. वो चाहते हैं हर खुशी मुसीबतों में कैद हो, वो चाहते हैं हर तरफ कदूरतों का दौर हो, कहीं पे बन के शाखे गुल, कहीं पे बन के संगिरा। Not in my league. Abort.
Raghu, why are you here? Why am I here? I mean, not in my name. That's the point. Because I love my country, but maybe not as much as Arnav loves. But I love my country from my heart. And any countryman getting killed for no fault of his is a tragedy for me. You see, when Junaid was stabbed to death on Friday, Saturday morning, I drove down to his village and I was horrified how Junaid's mother was in revulsion, in pain. The whole village was so tense and sad. Raghu, are you here as a photojournalist, a citizen, a humanitarian, with political feelings? In what capacity have you come? I think I am every bit of all that you've said, because that makes a journalist as a complete, responsible individual. I must look at it from various aspects. So, me, first of all, as a human being, my heart bleeds for it, and I am concerned. Nobody has assigned me. My heart has asked me to go. I am being pulled by my feelings that I need to be there and capture it. Raghu, in such a crowd, how do you identify a film that you're going to take? How does it happen? What is the magic secret? How do you take your camera? How do you... I came here, I stood right in the middle, I didn't take any photographs because it must seep in, I must get those feelings and energies the way they are touching me. I receive them, I perceive them and then capture them. Now, I have clicked a few pictures because there isn't much activity. It's a very peaceful protest. And it may not give me a great picture, but the spirit of it is what matters eventually. Raghu, as a photographer, you've covered many such protests in your life. How would you compare this one to that, to all the ones that you've done before? Here, the element of sadness and pain is visible in the atmosphere, which is sad. You know. Who are these people who killed Junaid? They were not BJP workers? Were they? They were not BJP workers. Were they Gaurakshaks? No. Were they some kind of jihadis, of Hindu jihadis? No. They were goons, they were gundas. Only gundas carry knives in their pockets when they are traveling by train. Now, in the name of cow, it has become an excuse I have never done this before. to play this game with anybody you don't like, Slightly very extraordinary. and especially the minority community. Even the Prime Minister should come down once in a while and see what is happening. It will help him and his country that he says he loves very much. That please don't forget that regimes will come and regimes will go. But what you leave behind is going to reflect for many long years.
Shit. Wait. Oh, I cannot watch this. I'll get copyrighted. Uh, End up Mahua Moitra? What the fuck Mahua Moitra did? Can I react to... fuck. Can I react to Bispo, or is this a guy that will copyright strike me? Bro, India, in my country, like, people just do not, like, appreciate the values of freedom of speech, essentially. Whenever they don't like people, like, reacting to their stuff or talking about them, they basically put a copyright strike. I actually am scared of, like, small creators than, like, larger mainstream bodies, essentially speaking. I mean, yes, India Express or ANI TV or these things do, like, put copyright strikes and stuff like that. But what's the most sad part about that is, like, normal day-to-day creators with like 200 subscribers, or like a couple of thousand subscribers, or like couple of tens of thousands of subscribers, like 20,000 subscribers, push like copyright strikes left and right, and that's pretty sad and pretty bad. I want to check like how many views I have. How to check those? Am I getting any views whatsoever? How to check that? Like, copyright strikes left and right, and that's pretty sad and pretty bad. Oh, is this getting in focused? I want to check like how many views I have. How to check those? Am I getting any views whatsoever? How to check that? Copyright strikes left and right, and it's pretty sad and pretty bad. Oh, is this getting in focused? I want to check like. Oh, I'm back in focus. I'm back in focus, boys. I'm back in focus. I'm back in focus. Huh? Okay. I want to watch something else before like starting to actually work. Basically, what should I watch? Give me something. I don't like this guy, by the way, Arun Anwo. He's his own fucking thing, man. Like, he's basically Hassan Piker of like Indian origin, essentially. Oh fuck. Okay. Let's watch something by Samdesh, then we might start watching something back, I guess. Wait, he was in Naxalbari? I don't know why people are like obsessed with Naxalbari in Bengal. Like, there's a city called Kolkata, right? Like, people like Meghnad was like talking about Naxalbari. I guess like Samdesh also like went to Naxalbari, Darjeeling Valley, and stuff like that. Uh, hey, what's up? Okay, let's watch this, and maybe then start reading or something like that. I'm a bit high of the Bacardi that I had. Oh god.
जय श्री राम। बंगाल में मोदी के आना चाहिए, जरूरी आना चाहिए। मोदी जी के लिए जान भी दे सकते हैं हम लोग। It is a double-header Sunday. Behind me is the Prime Minister's rally. इसे बोलते हैं बीजेपी का क्राउड। Yes, मोदी जी के लिए क्या कर सकते हैं आप ये बताइए। क्या नहीं कर सकते वो पूछिए। एक काम नहीं कर सकते, ममता को मार नहीं सकते, संविधान। Oh God, holy shit. Jesus. Like now there will be like these meme videos about Bengalis being like fawning about Modi and people would make fun of us. Like Jesus fuck man, what's wrong with these people? अधिकार नहीं दिए। मोदी के लिए क्या कर सकते हैं आप क्या कर सकते हो? मोदी के लिए क्या कर सकते हो? जान भी दे सकते हो। मैं क्या आपका प्यार जो है मोदी जी के लिए थोड़ा रोमांटिक भी है क्या? क्यों पसंद है मोदी जी जरा बताओ ना यार डिटेल में जो यार। इनको जो ये हिंदुत्ववादी को जो ये फिर से जागरूक जो किए, ये बीजेपी और मोदी सरकार का धन्यवाद से। ये आलू टमाटर पेट्रोल से हमें कुछ आता जाता नहीं है। फिर 100 रुपए हो चाहे 1000 रुपए हो, ओके, हमें बस वो जो होता है ना राष्ट्रवाद जिसे कहते हैं, हाँ, हम उसमें एक फीलिंग होनी चाहिए। क्या वेव है पूरी, सुनामी है, लाइक सुनामी, लाइक जापान वाली। अच्छा, जापान वाली। दीदी काम का आदमी नहीं है, नहीं मोदी काम का चाहिए। औरत है। मोदी चाहिए, वो गुंडा राज है। जो ममता दीदी है सनातनियों का साथ नहीं देती। नहीं, अब देता नहीं देता उनकी पर्सनल बात, पर हम जहाँ हमारी नजरिए से हम जहाँ देख रहे हैं तो थोड़ा देता है सर। अपने वोट बैंक और वोट बचाने के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है ना सर। सही बात है। ममता दीदी भी जाता है मंदिर, पाठ करता है, पूजा करता है, लेकिन वो कितना सच्चे मन से करता है वो नहीं पता। तो ये जो ये क्या बात हुआ? नहीं करती। नहीं, इसमें कोई ढोंगी नहीं है। नहीं, खामी दिखती है पार्टी में कि नहीं? नहीं नहीं, कोई खामी नहीं है। कोई खामी नहीं। ये लोग बोलते हैं ना कि जो भी करप्ट होता है बीजेपी में आ जाता है, लेकिन उसको फिर ले लेते हैं लोग भी। ऐसा भी तो हो ही जाता है। होता तो होता है, तो वो भी तो राजनीति है, राजनीति का चाल है वो है ना। हाँ है। तो ये भी तो प्रैक्टिकल ही है फिर। राइट है। आपका घर कहाँ पर? दिल्ली। चुनाव आयोग चीटिंग कर रहा है क्या थोड़ी? ऑनेस्टली बताओ। जय श्री राम। बास्ते चाय बीजेपी ताई, वास्ते चाय बीजेपी ताई। इसका मतलब क्या होता है भाई, हमको भी समझा दो। बचना चाहते हैं तो बीजेपी को चाहिए। अच्छा, पूरा खतरे वाला नैरेटिव है कि एक डर बैठा दो। आज मौसम कैसा है? जय श्री राम। आई लव मोदी। आई लव अमित शाह टू। आई लव अमित शाह। In fact, I don't mind a threesome between those two and me. यार ये जो ईरान और अमेरिका की जंग है, ये किसने रुकवाई? मोदी जी। साउथ सुडान में डेमोक्रेसी कौन लाएगा? मोदी लाएगा। ये बताओ, एंटार्क्टिका की सारी बर्फ किसने पिघलाई? मोदी। और परेशान भी करते हो। जीतोगे, हर बंगाली का दिल जीतोगे, फिर तो आप चुनाव जीतने वाले पक्का हो। हमारे नागेंद्र नाथ रॉय जी, भाइयों बहनों, आज से आपका प्रधानमंत्री। हेलो, what's happening with the election commission, bro? They don't seem so fair anymore. मोदी जी, thanks for the खीरा। हमें तो लगा आपका चाय का धंधा है। जयकारा लगा दो, जय श्री राम। 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 चलो भाई, चलो भाई, आ जाओ। आप हमें मरवा दे। भारत माता की जय। ये सूटकेस का साइज बहुत बढ़िया है, लग रहा है ईवीएम है उसमें। सर ये बीजेपी तो ठीक है, बोलती हम अलग हैं, लेकिन कोई भी भ्रष्ट नेता आ जाता है उसको ले लेते हैं, फिर बोलते हैं भ्रष्ट नहीं है। तो ये भी तो होता ही है, कभी कभी तो होता ही है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई तो होगा यहाँ डिनाई करने वाला। Symbolic of cages, the kind of vehicles we put our population in,
to come listen to our leaders. Just look at the cage-like behavior of this transportation vehicle. Look at this one also. दीदी को हटाओ देश बचाओ. दोबारा. दीदी को हटाओ देश बचाओ. पर दीदी तो बंगाल में है. दीदी बंगाल में रहे चाहे दीदी को हटा देना है चर्च से. और राहुल जी तो ऐसे ही जा रहा है तो राहुल जी को और क्या बोलेंगे, उनको तो मिल ही नहीं रहा है. मोदी जी की टॉप चीज क्या लगती है आपको, ये बताओ. टॉप 2 चीजें. He is a very kind person, like down to earth, like down to earth लगे आपको. वैसे आप लोगों को मोदी में क्या बहा रहा है, अभी कुछ बहा रहा है या नहीं? हाँ, कुछ तो करेगा ना गरीब के लिए. অনেক কষ্ট করছি মমতা দিদি কিছু দেয় না, মানে ওরা কমরেড গুলাই সব নেয়, আমাদেরকে কিছু नहीं. हमने जो काम किया था वो भी नहीं पाया. बीजेपी का एक क्रिटिसिज्म ये भी तो होता है कि यार कल को किसी लीडर को करप्ट बोला, अगले दिन अपनी पार्टी में आ गया. ऐसा नहीं होता, उसको जांचा जाता है, परखा जाता है. अच्छा, फुल प्रोसीजर होता है. और क्या वो, लेकिन वो होता ही नहीं है. अच्छा, गलत आदमी का यहाँ जगह नहीं है. तो जिसने आरोप लगाया होता है वो गलत आरोप होता है. वो गलत होगा. हर कोई कहता है ना कि पलटाना सरकार, मोदी सरकार. हाँ, इस बार पलटा के देखते हैं मोदी जी हम लोग के लिए क्या उन्नति पलटा के देखना है. इस हिसाब से तो मोदी जी भी दिल्ली में बैठे 15 साल से, उनको भी तबादला दे दें. तबादला देना तो चाहिए था, मगर उसके एगेंस्ट में बैठने वाला कोई होना तो चाहिए ना. ये बात पक्की है. अकाली दल, अकाली दल जिंदाबाद. क्या? He is chanting अकाली दल. बीजेपी, सीबीआई नहीं आएगा. सीबीआई नहीं आएगा. नहीं आएगा. सीबीआई बीजेपी आएगा. अच्छा, टीएमसी नहीं आएगा. बीजेपी आएगा तो सीबीआई तो आएगा. नहीं आएगा. तृणमूल कांग्रेस, ज्योति बसु. Oh, Jyoti was. Oh God, I love him. I fucking love him. 3, 2, 1, montage. मोदी जी, मोदी. श्री राम, श्री राम. फैंटास्टिक. कुछ शॉट सिर्फ स्टाइल के लिए होते हैं. जय श्री राम. Come on! Come on! Come on! Come on! Yeah! The battle is intense! Not Bengal! कैसे गया? एक बार फिर करियो. The battle is intense! Love you, Modi ji. ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो है, हाँ, इसमें टोटल चाय के वर्कर्स कितने होंगे? एक बड़ा स्टेट में 50-60,000. 50-60 हजार एक स्टेट में वर्कर. मतलब वर्कर इन सेंस पॉपुलेशन, वर्कर हार्डली आपका 200 से 300 होगा. तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप बगान में काम नहीं करोगे, हाँ, तो आपको वो जगह खाली करना पड़ेगा. यू कैन नॉट स्टे. प्लांटेशन वाज बेस्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड देन वी वर इन द रिसीविंग एंड, लाइक आदिवासी कम्युनिटीज. आप लोगों की फैमिली कितने साल से थी भाई इसमें? अभी भी होंगे ही कुछ लोग? हाँ, नहीं, अब जब ये प्लांटेशन जब स्टार्ट हुआ इस एरिया में, इस रीजन में, हाँ, तो लाइक माय ग्रेट ग्रैंडफादर्स, हाँ, उनको ले आया गया है इधर. अच्छा. हाँ, उनके बाद वो जनरेशन चली रही है. वो कहाँ से आए थे और उनको कौन लाया था? वो छोटा नागपुर रीजन. छोटा नागपुर प्लेटिव रीजन, वो रीजन से लेके आए गए हैं. स्लेव ट्रेड मतलब क्या उस टाइप का था? बट दे कॉल इट इंडेंचर्ड लेबर. ठीक है, वो टर्म का एक गेम है वहाँ पे. बट देन इफ यू अंडरस्टैंड दैट, जैसे स्लेवरी बंद हुआ, नया चीज क्या आया? इंडेंचर्ड लेबर. Sir, we are making a YouTube video. I run a YouTube channel. No. It's not allowed. Not allowed here on this road? On this road? This is our... Better you pack up and go to some other place. अंकल भी निक्कर पहन के आ गए रोकने. नहीं, they have to be babu, right? अरे यार, तो ये ओनर टाइप है क्या? They are not owning class, but then they are called babu. ये हमको ऐसे बोल रहा तो वर्कर्स को कैसे बोलता होगा? That's what. 200 साल. Okay, can I do this check? Oh no. 200 साल. Look, I am the first generation जो masters कर रहा है. Oh shit, man. So it took me that long. Man, it's crazy.
कोई बाग डोगरा भाई लैंड करे और चाय बगानों की बात ना करे, चाय बगान के वर्कर्स की स्थिति ना दिखाए, बहुत नाइंसाफी है। मान्छेको दीवाना पानी घाटा कुंबे जाई बनाना खाना ना खाना ना। आगे क्या तो फिर कोई बातें बातें करते हो या गाना गाते हो दिन भर? क्या करते हो एक दूसरे के साथ? बोर हो जाते होगे इस काम में तो? गफड़ी गप्पे गप्पे। What's the latest gossip then, man? कोई गालों का बात करता है, कोई बार का बात करता है, कोई हीरो हीरोइन का बात करता है, कोई धारावाहिक का बात करता है, ऐसे ही दिन काट जाता है। आपका बच्चा भी यही करता है या पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई पढ़ाई। जो नया पीढ़ी है उसमें नहीं आ रहा है? क्यों? हैं? इसमें भविष्य नहीं है अब आने वाला पीढ़ी का। आपका नाम क्या है काकी? आपका नाम? हाँ? मेरा नाम गंगा है। आपका कितना बच्चा है? बच्चा? हाँ। बच्चा तो मेरे साथ है। क्या कर रहे हैं? कोई पढ़ रहा है, कोई बाहर काम करने के लिए गया है। यहाँ काम ही नहीं है क्या? तो ज्यादा पढ़ाया लिखाया। कोई बेंगलोर में है, कोई इजराइल में है। इजराइल में भी? आज बेटी लोग को शादी हुआ। इजराइल में तो जंग चल रही है। चल रही है क्या कर? ये जो पत्ते इकट्ठे कर रहे हो, ये कहाँ देना है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री कहाँ पे है? ओ बेलगाछी। कितना दूर है? मतलब रोज देते हो या एक हफ्ते में एक बार देते हो? रोज। इंस्टेंट है। Got it. ये तो बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं। इतने बड़े ही होते हैं? जो टी प्लकर्स है वो बहुत कम होते गए। अच्छा, इसलिए बड़ा बड़ा पत्ता हो रहा है। बड़ा बड़ा क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है प्लक करने के लिए और टाइम बहुत दिन हो गया। रुपया में कौन काम करेगा? 200 रुपया। तो आप तो कर रहे हो। केटीहरू भाग्यो दिल्लीतिर कमाउनु गयो पूरे स्पीड देखो दीदी की। दीदी इज यूथ, दीदी इज इन प्राइम। एक दिन में कितना निकाल लेते हो? 40-50। 40-50 किलो? 40-50 किलो निकाल लेते हो? तो 20 kg तो है ना, 24 kg is mandatory to get that wage. ओके। अच्छा 24 kg। हाँ हाँ। क्या बोला दीदी? और पैसे मिलेगा हम लोग का। अच्छा 24 किलो में 200 रुपए मिलेगा। 250। और अच्छा 250। उससे ऊपर कर लिया तो 5 रुपए पर केजी करके बोनस, इंसेंटिव। इंसेंटिव। अपने जान लगा दो, मार दो खुद को 5 रुपए के लिए। टी गार्डन ये खुला था, एक तरीके से चल रहा था। जितने भी एंटाइटलमेंट होते थे, जैसे मेडिकल लीव, ठीक है, वो झूला, एंड देन चाय पत्ती, इवन चाय पत्ती तो ड्रिंक फॉर देमसेल्फ, राशन वगैरह सारा मिलता था। अभी सिर्फ वेजेस मिलता है इनको। दीदी सर बाथरूम का? बाथरूम तो नहीं है। यहाँ बाथरूम नहीं है? तो आपको अगर जाना हो तो? हम लोग जाना है तो जंगल इधर उधर। अच्छा, खुले में ही? खुले में। इधर बगान में तो कुछ बाथरूम वाथरूम कोई नहीं बनाता है। तो दिक्कत नहीं होता है ऐसे खुले में जाने में? दिक्कत तो होता है कभी कभी। हम लोग घर से करके आता है, बार बार नहीं आते। खुले में मुझे अच्छा नहीं लगता। वोट करते हो इलेक्शन में? करते हैं। वो जो नेता आते हैं उनको नहीं बोलते आपकी ऐसे हालात है इस धंधे के? वोट के आने के बाद बोलता है ये करूंगा वो करूंगा। वोट जीत जाने की कोई आगे नहीं आता है। चुपचाप है। फिर 5 साल में फिर आके बताता है ये करूंगा वो करूंगा। फिर 5 साल बीत गया, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते। ऐसे ही है, सभी नेताओं का ऐसे ही है। What can you tell me about the social demographic of this area that you've grown up in? बेसिकली जो टी प्लांटेशन एरिया है, राइट, यहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी है आदिवासीज एंड नेपाली कम्युनिटी, राइट। दे आर हियर। एंड देन जो मार्केट प्लेसेस होते हैं जहाँ पे एकदम मार्केट दुकान है, बाजार है, ठीक है,
So वो चीज में they are not Adivasis and Nepalis. Like my parents were settled in a bazaar, right? जहाँ पे मेजर कम्युनिटी इज लाइक बंगाली, नेपाली, ठीक है, आदिवासी कम्युनिटी एक ही फैमिली था मेरा, राइट? एंड देन देयर आई रियलाइज दैट द पीपल हैव दैट अंडरस्टैंडिंग अबाउट आदिवासी कि अरे आप लोगों को तो चाय बागान के लिए ले आया था. एंड व्हाट आर द स्टीरियोटाइप्स दैट पीपल वुड यूजुअली हैव? जैसे कि ये होता था कि अगर मेरे को कुछ काम कराना है, लेबर काम कराना है, तो दे डिडंट यूज्ड टू से कि मेरे को 2 लेबर चाहिए, 2 आदिवासी बुला लेंगे. आप अपने आप को क्या बुलाते हो? मतलब जैसे नेपाली या फिर क्या है? आप अपने आप को क्या बुलाते हो? मैं अपने आप को क्यों बुलाऊंगा? ये हुई ना बात, ये कैंसिल आउट कर दिया. थैंक यू आंटी, लव यू. आंटी जी लव यू. एक लव यू टू तो दे दो. लव यू. लव यू भनेको चाहिँ के हो? लव यू ऑल. लव यू ऑल. ये साग खान्छ. ये साग हो. साग है. इसको चटनी में डालूं मैं, है ना? इसको चटनी में डालूं. I like Shamdesh, okay? Like Shamdesh is such a like nice, you know, like fresh, like I don't know how to say this. Like he's like a breath of fresh air, basically, right? Like he talks so frankly with people he doesn't even know. Like he talks as if they are like his own family and stuff like that. Like that is so cool. And like my introvert as like is really like jealous, not the word I'm finding, like is envious of some days the way he can talk with random ass people without even stuttering. Like he will say the most like outrageous shit. And oh god, I love this guy, okay? I aspire to be this guy, but hey, I know I wouldn't be like some days. That's why I only enjoy by watching this guy, basically. पत्ता कौन सा तोड़ना होता है? अब ये तोड़ियो, ये तोड़ियो, यहाँ बड़ा बच्चा आउँछ, यहाँ बड़ा ये सब बच्चा आउँछ. इधर होता है बच्चा. बच्चा ये. अच्छा, छोरा छोरी वाला मामला. ये इसमें छोरा कौन छोरी कौन? सब एउटै हो. छोरा छोरी और जी चल रहा है. हाँ ठीक. हस्बैंड है? हाँ, वो क्या करते हैं? बगान में पत्ती टिप्छ. पत्ती टूटता है. ये तो सिर्फ औरतें नहीं करती, इसमें मर्द लोग भी हैं. मर्द पनि छ त. अच्छा. पूरा छ ग्रुप. पूरा ग्रुप है. ग्रुप में किया जाता है. ग्रुप छ. ग्रुप भनेको चाहिँ थुप्रै जग्गा मेला होता है. थुप्रै जग्गामा छ. एक जग्गा मात्रै छैन. चाहिए मेला लगा हुआ है आप लोगों का. ये मेला है. ये मेला. Okay, this is the last video I'm watching, then like we'll go to research stuff. Let's go. Like this is the like longest stream that I'm doing in my life. बीच में ब्रीजर खा के थोड़ा सा हाई हो गए हैं भाई, क्या बोल रहे हैं. सर मुझे लगता है इस बार. कभी सोचा है तुम कौन हो? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा नाम, पूरा नाम, उससे क्या फर्क पड़ता है? 9 बजे पंचायत गया है, 4 बजे आया है घर, इसलिए फिर बोला है बीडीओ ऑफिस में आओ. क्यों? और जब कहीं अपने नाम के साथ एड्रेस, अपना रिलीजन लिखते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हुमायूं कबीर. तुम कहाँ रहते हो, किसके बीच रहते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये कानून भारत सरकार का है और इसको स्वीकार करना. उसकी लाश यहाँ पड़ी थी, पूरा सर अलग कर दिया था. तुम कौन हो
और उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ हो रहा होगा ना जो हो रहा है। दादा दादा सांगोजी दादा दादा सांगोजी क्यों 1942 से यहाँ पर है। 1942 यहाँ पर ही मेरे दादा का जन्म, मेरे पिता का जन्म, मेरे माँ का जन्म हुआ था। हमारा ये जगह, ये कब्रिस्तान, सब कुछ यहाँ पर है। मेरा पास हमारा दादू का गीदा का मेरा कागज है, ठीक है, सब दे देंगे हम। अगर मैं आपको कह दूं कि अभी प्रूफ करो कि तुम इंडियन हो कि नहीं, तो आप क्या दिखाओगे? आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी। पर हमारे देश की ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कह रही है कि अब ये सब नहीं चलेगा। हमें चाहिए 2002 की वोटर लिस्ट में आपका या आपके माँ बाप का नाम, और अगर वो नहीं मिला तो आप इस इलेक्शन में वोट नहीं कर पाओगे। 2002 इनके साथ आपको भी याद होगा आज से 24 साल पुरानी घटना है। इस बार एसआईआर के लिए ईसीआई ने एक एआई सॉफ्टवेयर का यूज किया, और इस सॉफ्टवेयर ने इतनी गलती की कि 60 लाख लोगों की आइडेंटिटी को क्वेश्चन किया गया, उनको हेयरिंग के लिए बुलाया गया। ये शुगर का रोगी है, डायबिटीज का रोगी है, 9 बजे पंचायत गया है, 4 बजे आया है घर, इसलिए फिर बोला है बीडीओ ऑफिस में आओ। किस लिए किस लिए किस लिए, क्यों क्यों क्यों? अब हमारा लोकतंत्र 75 साल पुराना है, एआई 75 महीने पुराना भी नहीं है। तो ये तरीका कितना वाजिब था, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स भी श्योर नहीं थे, पर फिर भी किया गया। बिना किसी ह्यूमन ओवरसाइट के 60 लाख वोटरों के नाम कट गए। मार्च 2026 से वो सारे लोग इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर खड़े अपने दस्तावेज प्रूव करने के लिए कि वो इंडियन है। कुछ के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हुए, बहुत सारों के नहीं हुए। अब लाइफ ने अगर आपको थोड़ा भी प्रिविलेज दिया है, अगर आपके पास एक नौकरी है, सैलरी है, कोई बिजनेस है, इलेक्टोरल रोल में नाम है कि नहीं, वोट करने मिलेगा नहीं, उससे आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप बस उनकी व्यथा समझने की कोशिश करना जिनके लिए ये काम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिनका नाम वोटर लिस्ट में आता है, जिनकी सिटीजनशिप प्रूव होती है, उनको सरकार की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारी स्कीम्स में लाभ लेने को मिलता है, जो उनको अपनी जीवनी चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। और जब उनका नाम कटता है तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। इसलिए जब बहरामपुर में हम लोग बीएलओ ऑफिस के बाहर गए तो लिस्ट में नाम है या नहीं है, कब आएगा, इसको लेकर लोगों में बहुत डेस्परेशन दिखी। फाइनल काउंट में 91 लाख लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया। ये कितना बड़ा नंबर है, जस्ट फॉर रेफरेंस अगर बताऊं तो कई सारे ऐसे विकसित देश हैं जहां पर टोटल आबादी इतनी नहीं है जितने लोगों के नाम एक स्टेट में एक बार की वोटिंग लिस्ट से हट गए। और इनमें से कई सारे नाम वो भी थे जिन्हें बीजेपी ने खुद पिछले इलेक्शन में सिटीजनशिप देने का वादा किया था। और ऐसे ऐसे लोग जो उसी जगह पे 30-30, 40-40 साल से रह रहे हैं, कारगिल में युद्ध लड़ने वाले फौजी, रिटायर्ड जजेस, ऐसे लोगों का नाम रातों रात सस्पेक्टेड कैटेगरी में आ गया। आज हम उन लाखों लोगों की बात करेंगे जो दस्तावेज लिए किसी ना किसी ऑफिस के बाहर घंटों लाइन में खड़े रहे, ये साबित करने के लिए कि वो इंडियन है। इलेक्शन कमीशन की वो प्रोसेस जो इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। आपने नाम सुन ही लिया होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बात करते हैं एसआईआर की। कभी भी किसी का वोटर का नाम काटा जाता है या जोड़ना होता है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है बीडीओ की, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का। ये बहरामपुर का बीडीओ ऑफिस है। अगर किसी का नाम कट जाता है तो उसको एक फॉर्म भरना होता है, शायद फॉर्म 6 होता है। फॉर्म 6 में उसके कुछ डिटेल्स वगैरह होते हैं, वो भर के यहाँ पे डालना होता है ताकि वो दोबारा से वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाए। एसआईआर मतलब होता है इलेक्टोरल रूल्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इतनी बड़ी आबादी है, कई सारे लोग होते हैं जो अपनी जगह को छोड़ के कहीं और माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरे शहर में जाके काम करने लगते हैं, कई सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन उनका नाम वोटिंग लिस्ट में रहता है और इससे डुप्लीकेट वोटर्स बनते हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन रिवीजन कराता है। ये इलेक्टोरल रोल्स के रिवीजन की प्रोसेस इलेक्शन कमीशन 13 बार पहले करा चुका है, और अब जो हो रहा है वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तब डॉक्यूमेंट्स लगे, 28 फरवरी को आएगी। अगर मान लो फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो मेरे पास क्या है फिर? হিয়ারিং তো একটা পর্যন্ত হয়েছে, ঠিক আছে, তারপর এগুলো যেগুলো জমা পড়েছে আমাদের ডকুমেন্টস, সেগুলো তো আপলোড হবে।
मतलब बोल रहे हैं ये कि अभी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हुआ है उसको लेके ये लोग अभी माइक्रो ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद जो जो सही डॉक्यूमेंट्स हैं उन लोगों को क्लियरेंस दे देंगे। बाकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज निकल रहा है तो उसमें कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो उनके लिए फिर से हियरिंग के लिए बुलाएंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये तो। अब एसआईआर क्या है अगर वो समझ गए तो बताता हूं एसआईआर होता कैसे है। हर वोटर के घर पे एक बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर पहुंचता है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है जो टेम्परेरी तौर पे टीचर्स को या आंगनबाड़ी वर्कर्स को बनाया जाता है। एक बी Okay, hold on. I have to leave. Okay, just for 2 minutes. Hey guys, listen. I have got this bag, okay? ये bag खरीदे हैं. Does it look cool? Yeah, I mean, to me it does. 50 liters का bag है. I don't know. Is it actually 50 liters or not? Like it costed me 4,000 rupees. It costed me 4,000 rupees and it's 50 liters. I don't know if it's worth it or not. But hey, I already spent my money, so let's believe that it's worth it. Yeah.
Hey, I'm back. Let's complete watching this, and I don't know if I can or if I would, but I would at least try to make video or sorry, I'm still fucking high. Start talking about the other thing that I thought of doing today. वो वोटर से दिए गए फॉर्म को लेता है और ईसीआई के ऐप पे जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उससे मैच करता है। जो मैच हो गए वो लिस्ट में रहते हैं, जो जगह से या दुनिया से निकल लिए वो हट जाते हैं। पर वेस्ट बंगाल में जो हुआ वो बाकी स्टेट से थोड़ा अलग था, और वो क्यों हुआ वो आप समझते हैं। इसके लिए यहाँ घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है, घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। भाजपा का सबसे बड़ा जो इशू है जो वो बना रहे हैं इस इलेक्शन में, जिस पर वो टीएमसी को टारगेट कर रहे हैं, दैट इज द इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन थ्रू वेस्ट बंगाल एंड बॉर्डर एरियाज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाल गोला, और ये लाल गोला अगर आप मैप पे देखोगे तो ये मुर्शिदाबाद के थोड़े ऊपर पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा रास्ता बन जाता है यहाँ पे अगर किसी को इलीगली एंटर करना है, एंटर करने के लिए। देखो, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 4000 किलोमीटर से भी लंबा बॉर्डर है, जिसमें से आधे से ज्यादा वेस्ट बंगाल के अंडर आता है। इसमें नॉर्थ 24 परगनाज, मुर्शिदाबाद, मालदा, कूच बिहार जैसे एरियाज बांग्लादेश से बिल्कुल सटे हुए हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश आज से हिस्टोरिकली ज्यादा नहीं 100 साल पहले चले जाओ तो सेम ही जगह थी, फिर पॉलिटिकल बाउंड्री बन गई, एंड ऑब्वियसली वो सिमिलैरिटी खत्म नहीं हुई, आज भी है। दोनों जगह के लोग सेम भाषा बांग्ला बोलते हैं, रहने खाने भी सेम है। तो जब बांग्लादेश से लोग माइग्रेट करके वेस्ट बंगाल आते हैं तो इंडियन पॉपुलेशन के साथ वो आसानी से घुल मिल जाते हैं। और इसी चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे बीएसएफ भी तैनात होती है, बहुत सारे लोकल्स भी है, तो थोड़ा रिस्की इलाका है। यहाँ पे जाके देखते हैं कि हम लोग को क्या मिलता है। तो यहाँ से हम अभी निकल के जा रहे हैं नाव क्रॉस करके निर्मलचर। निर्मलचर इज़ बेसिकली एन आइलैंड ऑन द रिवर। इसके पार है पद्मा नदी और उसके पार है बांग्लादेश। इनफैक्ट ये जो एरिया जहाँ हम अभी कदम रखने वाले हैं ये कुछ टाइम पहले बांग्लादेश का पार्ट था। इसी ट्रैक्टर से अभी हम लोग सफ़र करेंगे। किलोमीटर बांग्लादेश, 1 किलोमीटर छड़े हमारे 1 किलोमीटर। ये है मुर्शिदाबाद साइड, लाल गोला साइड का इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। अब ये तुम्हें दिख रहा है ना, पीछे पीछे जा रही है पद्मा नदी, ये उसकी छोटी ट्रिब्यूटरीज के पीछे एक और पद्मा नदी है, और यहाँ तुम्हें दूर दूर में जो लाइट दिख रही है वो बीएसएफ के पोस्ट है। वैसे तो बॉर्डर एरिया वेल प्रोटेक्टेड है, पर बहुत बड़े एरिया में फेंसिंग नहीं है। नदी अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है, कटती रहती है, तो वहाँ फेंसिंग करना मुश्किल भी है। इस नदी को क्रॉस करेंगे वो जो है वो आपका बांग्लादेश का इलाका हो जाएगा। अभी हम अगर नहाते हैं, नहाते हुए भी हम लोग बांग्लादेश पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए पूरा बॉर्डर ना बहुत पोरस है। पीछे जाएंगे तो पीछे फेंसिंग है, वहाँ बीएसएफ के, वहाँ आप देख रहे हो वहाँ पे बीएसएफ के पोस्ट हैं, बट उतना सॉलिड नहीं है जितना सॉलिड आप एक इंटरनेशनल बॉर्डर सोचोगे। एंड ज्योग्राफी प्लेज अ ह्यूज फैक्टर, क्योंकि कई ऐसे एरियाज हैं जहां दोनों साइड सेम खेत हैं। कई जगह ऐसी नदी है जो पहले इंडिया से बहती है, फिर बांग्लादेश से बह के फिर इंडिया में बहने लगती है। आप मैप पे बाउंड्री बना सकते हो, नेचर थोड़ी चेंज कर सकते हो। और तुम्हें बताऊं कि रात के टाइम पे कितना मुश्किल हो जाता होगा इस चीज़ को मॉनिटर करना। लाइट बंद करो एक बार, भाग लो यहाँ से जल्दी। अब नॉर्थ 24 परगनाज, मुर्शिदाबाद, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बॉर्डर सबसे ज्यादा पोरस है। घुप पंदेरे के बीच में खेतों से गुजरकर या छोटी छोटी नाव से बांग्लादेशी माइग्रेंट्स बॉर्डर के इस पार आ जाते हैं। आने के बाद सबसे पहले एक राशन कार्ड बनवाते हैं। पॉलिटिकल कनेक्शंस, लोकल नेता या छोटे छोटे माफिया बन गए जो इनकी हेल्प करते हैं। फिर राशन कार्ड से आधार कार्ड, आधार कार्ड से बैंक अकाउंट, वहां से वोटर आईडी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और यहाँ पे बताना जरूरी है कि जरूरी नहीं कि हर कोई खराब इंटेंशन से ही आ रहा है। कई सारे ऐसे हैं जो परसिक्यूशन से भाग के आ रहे हैं वहाँ पर। कई सारे ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, वो यहाँ पे पैसे कमाने आ रहे हैं। पर एक बार वो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ के अपने आइडेंटिटी कार्ड ले लेते हैं, तब एक बांग्लादेशी माइग्रेंट टर्न्ड इंडियन और इंडियन में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है।
और इसी आर्ग्यूमेंट पे एसआईआर पूरा खड़ा हुआ है। जिस ऐप में पूरी सॉर्टिंग होनी थी उसने 3 कैटेगरी में डाला लोगों को। पहली थी मैप्ड, यानी कि 2002 की लिस्ट में भी इनका नाम मिल गया, ग्रीन टिक, सेफ, आगे नहीं बढ़ो। दूसरी कैटेगरी थी अनमैप्ड, यानी कि इनका नाम नहीं मिला पर इनके पास ऑप्शन था कि ईआरओ ऑफिस में जाके अपनी हियरिंग करवा लें। और तीसरी थी एकदम नई कैटेगरी जो इंडियन इलेक्टोरल प्रैक्टिस में पहले कभी नहीं थी। रेडी फॉर इट? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। इसका मतलब था कि नाम तो मिला पर कोई टेक्निकल एनोमली, कोई मिसमैच हो गया। इस कैटेगरी के लोगों को भी ईआरओ के पास सुनवाई के लिए बुलाया गया और यहां एक ऐसी प्रॉब्लम आई जिसने लाखों लोगों की जिंदगी उलट दी। 2002 की जो वोटर लिस्ट थी वो बंगाली स्क्रिप्ट में थी, तो 2025 में इलेक्शन कमीशन ने जो एआई सॉफ्टवेयर का यूज किया जिसने बंगाली टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया, उसने की बहुत सारी गलतियां। और बंगालियों को पता है उनका आ ओ का सीन बड़ा खराब है। सौमित्र सौमित्र हो जाता है, अरे सार्थक ही सोर्थूक हो जाता है। बंगाली हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, एआई की क्या पड़ेगी? एग्जाम्पल के साथ मान लो 2002 की वोटिंग लिस्ट में आपका नाम रतन घोष है। एआई ने जब इंग्लिश ट्रांसलेट किया तो उसने रतन घोष लिख दिया, तो आप आ गए किसमें? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में। अब आपको ईआरओ के ऑफिस में बार बार जाना होगा, वो पुरानी लिस्ट लेके आनी होगी, उसमें अपना नाम ढूंढना होगा और प्रूव करना होगा कि रतन घोष ही रतन घोष है और रतन घोष ही रतन घोष। तुम समझ रहे ना कि यही कंफ्यूज हो गया अपन। और ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी 1-2 लोगों के साथ नहीं हुई, 60 लाख लोगों के साथ हुई। नवंबर 2025 में वेस्ट बंगाल में 7.66 करोड़ 7 करोड़ 66 लाख वोटर्स थे। पहले राउंड में रफली 63 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए। उसके बाद सेकेंड राउंड में एडिशनल 27 लाख लोगों को इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया। फाइनल टैली आते आते रफली 91 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए। 91 लाख लोग। स्टेट के इलेक्टोरेट में लगभग 12% की गिरावट। इतना चेंज चुनाव हिलाने के लिए नहीं, पलटने के लिए काफी है। एंड विद इन वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा डिलीशन हुए बॉर्डर से सटे इलाकों में, और उसमें भी सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद। मैं इस टाइम पे हूँ बंगाल के बेलडंगा में और मेरे पीछे बन रहा है एक बहुत कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट, एक नई बाबरी मस्जिद। 6 दिसंबर को जब पुरानी बाबरी मस्जिद के टूटने वाला दिन था, तब यहाँ पर नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। अब ये टाइमिंग कह लो या कोइंसिडेंस कह लो, पर ये बंगाल की पॉलिटिक्स का एक नया एपिसेंटर बनने वाला है। तो इस टाइम पे सवाल ये कि जब ऑलरेडी आसपास में 100-200 मस्जिद हैं, तब यहाँ पर क्या एक नई मस्जिद की ज़रूरत है, या फिर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अयोध्या में जो हुआ उसके ऑपोजिशन में बंगाल में एक नई बाबरी मस्जिद खड़ी करके एक नई पॉलिटिक्स को आरंभ देना है। चलो जाके देखते हैं। ये जो तुम पीछे ईंटें देख रहे हो, कई सारे मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने ये सारी ईंटें दान की हैं और इन्हीं ईंटों से बनेगी नई बाबरी मस्जिद। ये 50 का है। ये 50 का है? ये बनेगा नहीं ना, लेकिन ये क्यों नहीं है? इधर कपड़ हाथ लगा के देख लीजिए ना भाई। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि मैं दिल्ली से हूँ, ये मैं पहन के नहीं जा सकता, वहाँ पे मसला हो जाएगा। सर यहाँ पे ये कितना करोड़ का प्रोजेक्ट है? उन्होंने बताया भी कितना, 6.5 करोड़ का गेट बनेगा बस। हाँ ठीक है। और टोटल पूरा कितने का प्रोजेक्ट है ये? 600 करोड़ तक। 600 करोड़ रुपया। और ये 600 करोड़ रुपया कैसे आ रहा है इतना? सब दान में। सब दान में। अभी तो काम तो चालू हो गया। हाँ। अभी ये कब खत्म होगा, कब बनेगा, ये पता नहीं, किसी को भी पता नहीं है अभी। हमारा तो मस्जिद में था मुस्लिम का, उसको तोड़ दिया है। हम लोग कुछ तकलीफ हुआ तो अल्लाह ने उस तकलीफ को दूर करने के फिर इस पर अल्लाह ने नियत कर दिया है कि यहाँ पर करो। हाँ, इसलिए आपने क्या बोला एंड में? क्या जिंदाबाद? लास्ट वाला बाबरी, उसके बाद हुमायूं कबीर जिंदाबाद। हुमायूं कबीर जो बनवा रहे हैं। हाँ, वो अच्छा, हुमायूं कबीर है। उनका क्या रोल है इस सब में? सब ठीक है। नहीं रोल मतलब ठीक तो है वो, बढ़िया, उनको तो आबाद रखे अल्लाह। ये हुमायूं कबीर जो हैं वो मतलब वो ही बनवा रहे हैं सब, वही सब मिलके। तो आपने उनका एंड में कैसे नाम लिया? अकेला सिर्फ वही? वो उनके सर से हो रहा है। वही सबसे शुरू किया।
अच्छा, हुमायूं कबीर। हाँ। वो पहले वही उद्योगता लिया, जेदार में बाबरी मस्जिद बनना पड़ेगा। अच्छा, वो इस बार खड़े भी हो रहे हैं इस बार चुनाव में। This Humayun Kabir guy is a fucking joke, okay? Mamata Banerjee should have fucking arrested this motherfucker. This motherfucker is a BJP agent, by the way, if you want to know, okay? BJP lets these people like thrive, like literally like giving hate speeches against Hindus and stuff like that, and like would fucking put Umar Khalids and stuff like that in jail using UAPA, okay? Like these people would be like आवाज रहेगा ये लोग, ठीक है? ये लोग को कोई छुएगा भी नहीं, स्पेशली बीजेपी छुएगा नहीं, क्यों जानते हो? Because as long as they exist, people like Humayun Kabir and like these extremists exist, like BJP can show that hey, these people exist, that's why Hindus should be extremists too. Like this is fucking retarded. Like Mamata Banerjee should have fucking like NSA वगैरह लगा के इस बंदे को घुसा देना चाहिए था जेल में. Fuck this guy, man. होगा। तो इस बार यहाँ से कौन जीतेगा आपके यहाँ से? हुमायूं कबीर जीतेगा। हुमायूं कबीर जीतेगा। क्यों? वो अच्छा आदमी है। अच्छा, तो आपको एक सवाल पूछूं आपसे, आप थोड़ा बुरा मत मानो तो। मैंने बोला कि आपको नहीं लगता कि कोई अगर वो खड़े हो रहे हैं, वो पॉलिटिशियन है वो, कि ये उनका एक तरीका भी हो सकता है कि भाई हम वोट ज़्यादा ले जाएं, क्योंकि अगर आपने इतना अच्छा पाक जगह बना दी। वोट का मामला नहीं, ये अल्लाह का घर है। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मस्जिद करेगा, मस्जिद के साथ पार्टी का कोई नहीं। अरे उन्होंने वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, मस्जिद अल्लाह का घर है। पहली बार तो ऐसा नहीं है, बट ये बहुत बार होता है कि सिचुएशन ना बहुत टेंस हो जाती है ऐसी जगह पे। मीडिया वालों की आजकल इमेज इतनी खराब है, खासकर जो मुस्लिम बाहुल इलाके होते हैं, कि वहाँ पर वो देखते हैं तो उनको वो सबसे पहले आके 4 लोग तो मॉनिटर करने लगते हैं कि क्या पूछ रहा है, क्या कौन सा चीज का वीडियो बना रहे तुम? यार आ जाओ, खड़े हो जाओ, आप भी बात कर लो हमसे। ये आ जाओ। क्या एक सेकंड, अरे इधर तो आ जाओ। कौन कोई मीडिया आया, किसी ने ऐसा कुछ किया? वो हम नहीं कर सकते बात, ठीक है? नहीं, मैं लेकिन आप तो बात कीजिए ना, बहुत आदमी है, हम लोग तो यहाँ का ही है। हम तो जो बताएगा अच्छा ही बताएगा ना। अभी यहाँ का जो आदमी लोग है उसको सब पूछ ले, लेकिन यहाँ पे गलत नहीं बोलना भाई। फिर उसके ऊपर से 4 लोग और कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं कि तुम हमारा रिकॉर्डिंग करोगे, हम तुम्हारा रिकॉर्डिंग करेंगे, तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है टू हैव अ कंस्ट्रक्टिव सॉर्ट ऑफ अ डायलॉग कि भाई हम तुमसे कुछ बेझिझक होकर पूछ लें, तुम बेझिझक होकर जवाब दे दो। और भाई ये मस्ती मजाक का तो कोई स्कोप बचता ही नहीं है। फिर यहाँ एक जोक मारा और वहाँ मेरे को लोगों ने मारा। Imagine being able to solve any research challenge for any discovery. अच्छा, वीडियो में थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। हम लोग ने सीरीज़ के पहले कोशिश की थी कि इसको कोई स्पॉन्सर मिले, पर जैसा आप कंटेंट देख रहे हो, कई सारे ब्रांड्स को ये रिस्की लगा और किसी ने अग्री नहीं किया इस सीरीज़ को स्पॉन्सर करने के लिए। ग्राउंड पे जाना, लोगों से बात करना, महीनों स्टेट्स पर कवर करना, फिर वापस आके पूरा इसको प्रोड्यूस करना, ऐसी जर्नलिज्म करने के लिए काफ़ी रिसोर्सेज लगते हैं। हमारी मीडिया चैनल्स के पास हैं, पर वो कर नहीं रहे। और अगर आप चाहते हैं कि हम वो करते रहें, तो हम आप पे डिपेंड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आप ऐसे काम को सपोर्ट करना चाहो तो प्लीज़ QR कोड ये रहा, आप इसको स्कैन करके जैसे भी जिस भी मात्रा में। Guys, if you want to support Shartak, this is the QR code. You should, like, creators like him exist, that's why like contents like this exist. Like समधीश, सार्थक जैसे क्रिएटर्स हम लोग के यूट्यूब कम्युनिटी के लाइक जेम्स है बेसिकली. सो दीज पीपल शुड बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट्स. सो या if you have any money to spare, I think you should like invest in these creators. Sarthak hua, Samdhish hua, and etc basically. So if you have anything, donate it. I'm just keeping it up for like couple of more seconds because I'm stealing his content. Hey, thank you Sarthak bhai for making contents like this. सकता है, हमें सपोर्ट कर सकते हैं. और अगर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, फ्री वाला तो कर ही सकते हो. अभी लाइक कर दो. पूरी वीडियो जब पसंद आए कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना. मोटिवेशन भी मिलती है, एल्गोरिदम को पुश भी. और अगर आप चाहते हो कि ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे लोग और बनाएं और लोगों तक ऐसा काम पहुंचे, तो इन हैंडल को मेंशन करके इस वीडियो को प्लीज शेयर भी करना. मैं अपनी स्टोरी पे उसको रीशेयर करूंगा. ऐसा ही मामले में इलेक्शन के पहले लेटेस्ट अपडेट था कि इलेक्शन के पहले चरण की जिस दिन वोटिंग थी उसके 3 दिन पहले 7 लाख लोगों को वापस वोटिंग रोल में उनका नाम मिल गया.
सुप्रीम कोर्ट ने एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग को सुपरवाइज करने के लिए लगभग 700 जुडिशियल ऑफिसर्स को वहां पे तैनात किया, पर 27 लाख वोटर्स जिनका नाम ऑलरेडी डिलीट हो चुका था, उन्होंने कोर्ट से इंटरिम रिलीफ मांगा कि भैया दस्तावेज यहाँ पे सुनवाई हो नहीं रही है, हमको थोड़ा टाइम चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ डिनाई कर दिया कि चुनाव आने वाले हैं। कोर्ट ने कहा कि 19 ट्रिब्यूनल्स को अप्रैल 15 तक सब केसेस डिसाइड करने का प्रेशर देना सिर्फ क्योस क्रिएट करना होगा। तो अप्रैल 2026 में 27 लाख इंडियन सिटीजन जिनके पास आधार है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, वो वोट नहीं दे पाएंगे। एंड बताइए like we think that like this is like whatever, like people didn't get to vote, like we do not care about like people's basic rights and civil liberties being violated by the government, like regardless of which party is in power, regardless of which reason, like this civil liberties are like getting eroded, like we very much don't care. Like if it is the civil liberties and the safety of Hindus getting eroded, people just get up on their tits and dance about it. But in the same place, like whenever it happens to minorities, whenever it happens to different weaker groups in the society, like nobody fucking cares. And this is pretty sad. Like not even people care about their own civilized rights and liberties. Like कितना बार तुम्हारा ट्रैफिक पुलिस ने तुम्हारा गाड़ी से चाबी निकाला है, तुम जानते हो दैट्स अ वायलेशन। कितना बार पुलिस ने तुम्हारा घर पे विदाउट वारंट घुसा है, जानते हो दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ योर ओन सिविल लिबर्टी। कितना बार ऐसे हुआ है जहाँ पर लाइक पुलिस रैंडमली तुमको तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा है एंड तुमको हरास किया है। Do you know that's a violation of your civil right and liberty? Like we as people, we as Indians don't care about these things. Like इसीलिए like these small things basically add up, and government feels so comfortable in eroding civil liberties and rights of these mass amount of human beings and see them as like just numbers on a paper and not like real living and breathing human beings who matter, who contribute to the economy, who exist, who are a part of the country, represent. क्यों है? क्योंकि 1952 में जब देश में पहली बार चुनाव हुए थे, तब हमारे पास मोबाइल फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, एआई नहीं था। तब भी इलेक्शन कमीशन ने घर घर जाके लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में ऐड किया था, चाहे वो जैसलमेर का कोई रेगिस्तान हो, हिमाचल का कोई पहाड़ हो या अरुणाचल का कोई दूर दराज का इलाका। हमने वादा किया था हर एक सिटीजन से कि उसका वोट काउंट होगा। ठीक है, इलेक्टोरल रूल्स को रिवाइज किया जाना चाहिए, अपडेटेड वोटिंग लिस्ट होनी चाहिए, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी, इतना सारा एडवांसमेंट होने के बाद भी जब इतने सारे लोगों का नाम सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से कट जाता है वोटिंग लिस्ट से, तो ये सिर्फ डेटा ग्लिच नहीं है, ये हमारे पुराने वादे पर एक चोट है जो 1952 में हमने हर एक भारतीय से किया था। जय गौ माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा महातीर झज्जर हरियाणा में। ये हमारा आईसीयू वार्ड है। किसी को उस चीज के बारे में कुछ पता है जो एसआईआर का मुद्दा यहाँ पे चल रहा है? हाँ, एसआईआर तो जबरदस्ती करता है, 3 मरतबा 4 मरतबा कागज मांगता है, फिर भाई उसका नोटिस आता है। हाँ। या यहाँ पर जो है जबरदस्ती ये सब करते हैं लोग, सब ठीक ठाक है। हाँ। ये मुस्लिम पर जुल्म करता है। विशाल कौन? ये जो बीजेपी सरकार जुल्म करता है हमारे ऊपर, जुल्म से जुल्म करता है। या बड़ी बात बोल रहे हैं। वहाँ बहुत जुल्म करता है, जुल्म का हद नहीं है। मस्जिद भांगो, माइक उतारो, इससे क्या होता है? हाँ? और अगर तुम्हें लग रहा है कि एसआईआर से सिर्फ मुस्लिम नाम कट रहे हैं तो तुम गलत हो। प्रोसेस में हिंदू कम्युनिटीज भी सफर कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मातुआ कम्युनिटी, ये वो दलित हिंदू रेफ्यूजी हैं जो बांग्लादेश में प्रताड़ना से परेशान होके, परसिक्यूशन से परेशान होके यहाँ पर इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर में आए थे, क्योंकि इन्हें बोला गया था कि सीए के अंदर आपको पक्की सिटीजनशिप मिलेगी। पर आज तक उनकी 1 लाख अर्जियों में से 4000 या 5000 लोगों को सर्टिफिकेट मिले हैं, जो 10% भी नहीं है टोटल आबादी का। उसके बाद ये एसआईआर के सॉफ्टवेयर ने इनकी बची कुची उम्मीद भी तोड़ दी। नाडिया और नॉर्थ 24 परगनाज में इनकी सबसे ज्यादा आबादी है, और वहां रिपोर्ट हुआ है कि इनके 55 से लेके 77% नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। अगर पूरे बंगाल में देखें तो कटे हुए नामों में 63% हिंदू हैं और 34% मुस्लिम। कहीं हिंदुओं के ज्यादा कटे हैं, कहीं मुसलमानों के ज्यादा कटे हैं, बट ये नाम कटने की वजह से जो पूरा बांग्ला की बोलছো সমস্যা
भीषण समस्या। अब कई बार नाम लेटर से डिफरेंट होते हैं, अपूर्वा, आकांक्षा, ऋतिक का एच कलर चला जाता है, अग्रवाल AGG। ऐसी सॉफ्टवेयर ने मोहम्मद और मोहम्मद सेम नाम सेम प्रोनाउंसिएशन बट एक दो लेटर यहाँ वहाँ, सॉफ्टवेयर ने उनको अलग अलग इंसान समझा और लिस्ट से हटा दिया। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मुस्लिम्स का बहुत कंसोलिडेटेड वोट होता है। एक ऐसी कम्युनिटी जो बंगाल में चुनाव का रुख तय करती है, इस पैमाने पे उसके नामों का गायब होना पूरा चुनाव का रुख बदल सकता है। ये बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा विवाद बन गया है। जयनगर नाउ विल बी द सीट जहां से हुमायूं कबीर लड़ेंगे। हुमायूं कबीर वही है जो नई बाबरी मस्जिद जो बन रही है वो बना रहे हैं। नाउ इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल कैरेक्टर। इसके पहले हुमायूं कबीर TMC में हुआ करते थे, फिर उसके बाद दिसंबर में जब उन्होंने बाबरी मस्जिद की शुरुआत की तब उनको TMC से निकाल दिया गया। तो अब वो जाके अपनी उन्होंने पार्टी बनाई है जिसका आज पार्टी ऑफिस वो खोल रहे हैं और अब वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो अभी इस टाइम पे जो इस एरिया का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस सबसे बड़े मुद्दे के बीच में जो सबसे बड़ा आदमी है वो हुमायूं कबीर है। सही कह रहे हैं भाई साहब? आप हिंदी बोलते पारिन ना हिंदी। अरे यार एक तो ये लैंग्वेज बैरियर। देखिए मुद्दा यही है, जो बंगाल का जो सरकार है अभी ये भ्रष्टाचार में जुड़ा हुआ है जी। वो तीन बार चुनाव में सत्ता में आया, लेकिन वो ज़्यादा नौकरी नहीं दिया। आप कह रहे हो 3 बार से किया, लेकिन आप भी तो इसी पार्टी में थे एक बार। या ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसी टाइम मुसलमान को चुनाव में वोट लेने के बाद नौकरी भी नहीं दिया, इसीलिए इनको खिलाफ बोला तो मेरे को सस्पेंड कर दिया। हुमायूं कबीर वो नेता हैं जो हमेशा से अपने भाषणों में ईमान और मुस्लिम हक की बातें किया करते थे। अब एक कम्युनिटी एक साथ वोट करके स्विंग वोटर बनती है तो उसके वोट काटना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टूल बन जाता है। आप जो अभी बाबरी मस्जिद बनवा रहे हो वो देश का एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया है पूरे में। पिछले साल तक मुर्शिदाबाद इलाके में यहाँ पे बहुत कम्युनल टेंशन्स हुए थे, यहाँ पे कर्फ्यू भी लगा था। आपको नहीं लगता कि एक ऐसा टॉपिक उठाने से अभी इसमें जो कम्युनल टेंशन है ये और बढ़ सकता है? 2 महीना से ज्यादा हो गया, कोई कम्युनल टेंशन भी कुछ नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक भी नहीं हुआ। जो मैं ये बनाने के लिए ऐलान किया तो इतना सारे लोग मेरा सपोर्ट में है। ये जो JOP पार्टी है ना, जनता उन्नयन पार्टी, ये सबका पार्टी है, लेकिन हम लोग इससे कम से कम 4 साल से इसका फैन है। आप क्या देख के वोट दोगे? जो बोलता है सच बोलता है। नेता आदमी है यार, सच नहीं बोलता। नहीं सच बोलते हैं। हम लोग जानते हैं ना, हम जानते हैं। अच्छा, इसलिए तो फैन हूँ उसका। जो बोलता है सच बोलता है, मुंह पे बोलता है, इसलिए। हुमायूं कबीर का रिसेंटली एक स्टिंग वीडियो वायरल हुआ है। मेरा पास पैसा चाहिए, जब 1,000 करोड़ आपके पास अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो आप सपोर्ट देंगे? पूरा सपोर्ट देंगे। उस स्टिंग वीडियो में वो 1000 करोड़ रुपए और डिप्यूटी CM कुर्सी के बदले अपने वोट्स की डील कर रहे हैं, वो भी बीजेपी से मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद में। वो अच्छा आदमी है, वेस्ट बंगाल टाइगर है, ज्यादा से आदमी है। वेस्ट बंगाल टाइगर तो दीदी को बोलते लोग ना। दीदी नहीं होगा, हुमायूं कबीर साहब होगा। क्यों? हुमायूं साहब क्या, इतना आदमी है। दीदी क्यों नहीं? ना दीदी नहीं होगा। अच्छा, वो गोत्तर आदमी है। चोर पूरा बांट गुजी दीजिए मुसलमान के पीछे बात गुजी में सब मैं पिटवाओगे आप? मोदी तो हमारे एलाकाয় আসেই না। वो भी चोर है। वो भी चोर है। जो ममता दीदी है वही BJP है। पहली जगह ऐसा देख रहा हूँ जहाँ मोदी ममता दोनों को एक साथ गाली पड़ रही है। अरे हमारे यहाँ तो लोग बोलते हैं कि दीदी मुसलमानों के लिए बहुत कर दिया। ममता कुछ नहीं कहा, ममता मंदिर बना। पर ये तो पहले TMC में ही थे ना। ममता टीम से है, कितना मुसलमान कुछ नहीं कहा। अब तो बाबरी बन रहा है, लेकिन बाबरी हुमायूं कबीर साहब बना है। अच्छा, हुमायूं साहब को और आप इसलिए वोट दोगे? हुमायूं कबीर तो वोट देगा। जब उन गांव के लोगों से बात कर रहा था तो एक इनोसेंट सी सही बट एक उम्मीद तो दिखी कि हुमायूं कबीर मुसलमानों का मसीहा है, वो हमारे लिए हक की आवाज़ उठाएगा, हमारा इकलौता हक है वोट, वो हम इनको देंगे। और वो उनका वोट बेच रहा है। I'm sorry.
This, fuck me, man. Fuck me. It reminds me of the saying. What was the saying? How to like. How to. There was a saying I'm forgetting. Uh, what am I thinking about? Like, give them religion, give them things to like. Why am I? Fuck me, man. Fuck. I'm not getting the thing I'm finding. It is something about like keep them indulged in like food, keep them indulged in religion, keep them indulged in like intoxicating substance like drinks and drugs and stuff like that, and they will forget how you can just take advantage of them or something like that. That was the saying. I'm just forgetting the saying. If I get it, I will play it in a YouTube short or something like that. But yeah, this is the fucking truth of our country. Like, if you think that hey, these Muslims are beshara, like think about BJP, man. Like, think about fucking BJP, and think about the Hindus who like actually think like BJP is trying to like better the condition of Hindus in the country. Essentially, they are like suppressing the Muslims and killing the Muslims, and that contrast essentially makes the Hindus relatively better than the Muslims. But like, are they really doing anything for the general populace of the country? Who knows? me पैसा एंड कुर्सी, I'll give you my ज़मीर। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये ऐसी भी है जो हंगर इंडेक्स के मामले में, पॉवर्टी के मामले में, एजुकेशन के मामले में पिछड़ी है। एक सवाल ये भी आता है कि क्या यही पैसा जो है वो और कामों में, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने में, यहाँ पे सड़क, यहाँ पे डेवलपमेंट में नहीं लगाया जा सकता? मैं ये मुसलमान को कौम के पैसा में ये मस्जिद बना रही, वो बोलने वाला कौन है? जो एडुकेशन बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, वो तो सरकार का काम है। अरे कृष्णा, अरे ये आपकी उंगली ये स्किप बटन पे क्या कर रही है? अरे इसको Oh हटा लो। अरे fuck, man. ये बातें बोल। और वो जो जज्बात मैंने तब जाके ऑन राउंड देखे थे, वो अब शायद आपको नहीं दिखेंगे। मुसलमानों में हुमायूं कबीर का कद और रैलियों में भीड़ दोनों कम होगी। और ये कहानी सिर्फ हुमायूं कबीर की नहीं है। हम सब जानते हैं कि अरसों से हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट को यूज करते आए, उसको भड़काते आए अपने लिए। लोगों के बीच में, आसपास, दोस्तों, पड़ोसियों के बीच में नफरत बोते आए उनका वोट लेने के लिए। वो नफरत का बीज जो ये बो के अपनी फसल ले जाते हैं, बचता क्या है पता है? पहले शुक्रवार को दुनिया की तरफ हुआ और हमारे यहाँ शनिवार को।
सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। दोपहर के 11 बजते बजते पति को, बेटे को, सबको डाला। यहाँ उनका सर था, उसको पूरा अलग कर दिया था, और वहाँ मेरा बेटा पड़ा हुआ था। क्या कोई बचाने नहीं आया? सब बम चला रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे। घर से लेकर उस नीचे तक पूरा ईंट पत्थर भरा हुआ था। जिन्होंने ये किया, क्या वो यहीं के लोग हैं? हाँ, यहीं के लोग हैं। मैं सबको पहचानती हूँ, रास्ते में बातचीत भी होती थी। मुर्शिदाबाद की हिंसा की जड़ 1971 की जंग और उसके बाद बदलती हुई आबादी से जुड़ी है। शुरू में जो लड़ाई अपनी अपनी जमीन की थी, वो 1990 और 2000 के दशक के आते आते पंचायत चुनाव और पुरानी दुश्मनी के चलते बूथ लूटने तक आ गई। और भाई, विधायक सांसद के चुनाव तो कुछ नहीं है, बंगाल में पंचायत के चुनाव में पॉलिटिकल वायलेंस आम बात है। लेकिन इस हिंसा ने अपना सबसे भयानक रूप देखा था 2019-20 के CAA NRC प्रोटेस्ट के दौर में। मुर्शिदाबाद और बेलडंगा के इलाके में तो इतना ज़्यादा खराब माहौल था कि तोड़फोड़ हर जगह हुई। राशन की दुकानें, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन तक जला दिए गए थे। 2021 में जो चुनाव हुए थे, उसमें 50 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। और उस चुनाव के 4 साल बाद अप्रैल 2025 में पार्लियामेंट में आता है वक्फ अमेंडमेंट बिल। एक कानून भारत सरकार का है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। देखते ही देखते प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गया। भीड़ हिंसक हुई, अनसोशल एलिमेंट्स आए। 8 अप्रैल को उमरपुर में हाईवे ब्लॉक हुआ और वहां पे गाड़ियां जला दी गई। 11 अप्रैल तक शमशेरगंज और सूती इलाकों में तोड़फोड़ हो चुकी थी। लोग अपने घर में बंद हो चुके थे कि बाहर माहौल सेफ नहीं है। लेकिन 12 अप्रैल का दिन सबसे खतरनाक था। धुलियान के जाफराबाद में भड़के हुए मुसलमानों की भीड़ ने हरगोबिंद दास और चंदन दास को उनके घर से निकालकर उनकी फैमिली के सामने काट कर मार दिया। और ये कोई बाहर से आए लोग नहीं थे, ये आस-पास के दोस्त पड़ोसियों में से लोग थे। तो फिर क्यों मारा? कैसे बताऊं, बस खत्म कर दिया। मतलब अभी तक पता नहीं चला? अब क्या पता चलेगा, सब अपराधी अब पकड़े गए हैं। जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद तहकीकात पहुंची, पुलिस ने दबिश की, 13 लोगों को अरेस्ट किया गया। ना कोइंसिडेंटली जब हम वापस जा रहे थे तो उनमें से कुछ के घर वाले भी हमें वहां पे मिले। इन चाचा का अपना बेटा अरेस्ट किया गया था। असली खूनी को तो पकड़ा ही नहीं गया, मेरे बेटे को उठा ले गए। तो उनको क्यों पकड़ लिया? वही तो बात है, वहाँ एक कैमरा था पर उस घर के लोग उसे नहीं दिखा रहे। जो 13 से 14 लोगों को पकड़ा है, उसमें से कितना निर्दोष है, इसकी जांच तो अभी हो रही है, तो अभी कहना मुश्किल है। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे लगता है कि उन 13 से 14 लोगों में ज्यादातर निर्दोष है। पुलिस ने 4 घंटे तक कुछ नहीं किया। उन्हें बार बार फोन किया गया पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उससे पहले दिन 1700 BSF के जवान आए थे पर उन्हें कहाँ रखा गया? अगर ये पता चले तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। कई लोगों का गलत इस्तेमाल किया गया है, उन्हें फंसाया गया है। कहीं तो जब तक असली जो है वो नहीं पकड़े जाएंगे तो उनके बेटे को कैसे छोड़ेंगे? वही तो बात है ना, उसका घर में खुद कैमरा था। कैमरा जब निकल सामने आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुझे किसी ने कोई नाम नहीं दिया, ना उन चाचा ने, ना उनके पड़ोसियों ने और ना चंदन दास के घर वालों ने। तो मेरे दिमाग में 2 सवाल थे कि किसे फंसाया जा रहा है और उससे बड़ा किसे बचाया जा रहा है। 13 लोगों को सजा सुनाई गई है, उन्होंने अपील की है, तो मैटर अभी सब जुडिस है। एग्जैक्टली क्या हुआ था वो इन्वेस्टिगेशन के बाद शायद हमें किसी दिन पता चले। पर इतना जरूर बता सकता हूँ कि एक ही मोहल्ले के घर, जिनका एक दूसरे के घर में आना जाना था, फंक्शंस में साथ में उठना बैठना था, जिनके बच्चे एक दूसरे के आंगन में खेलते थे, अब उनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। अब वो हिंदुओं का घर है, वो मुसलमान का घर है। अब इस डॉक्यूमेंट्री में इसका आपको एसेंस पता चला है, पर इस जगह हम कैसे पहुंचे, हमने क्या बात की, एक पूरा लंबा कॉन्वर्सेशन है। अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसकी एक अलग से हम पूरी डॉक्यूमेंट्री बना के अपने चैनल पर डाल सकते हैं। तो मैं वापस वही सवाल पूछता हूं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि आप कौन हो के अलावा आप क्या नाम लिखते हो, कहाँ रहते हो, किसके बीच रहते हो, किसे मानते हो, ये सब आपकी आइडेंटिटी है। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करती है कि जब आप घर से बाहर निकलोगे तो दुनिया आपसे कैसे वाकिफ होगी, आप किसे अपना मानोगे, कौन आपको अपना मानेगा। जब इलेक्शंस आएंगे आप वोट किसको दोगे ये आपका हक है, पर आपका वोट किसे चाहिए ये आपकी आइडेंटिटी है।
जो डरा के भड़का के लोगों की भीड़ बनाते हैं, और फिर ये एक से लोगों की भीड़ किसी दूसरे की आइडेंटिटी को टारगेट करती है। उस भीड़ के लिए कोई इंसान नहीं होता, उस भीड़ में भी कोई इंसान नहीं होता। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स स्टील्स योर आइडेंटिटी। इसीलिए अपनी आइडेंटिटी पर, अपनी पहचान पर किसी को राजनीति मत करने दो, क्योंकि आइडेंटिटी से फर्क पड़ता है। उससे आप भीड़ का शिकार भी बन सकते हो और भीड़ का हिस्सा भी। अगर आप हमारे काम को, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहें तो ये रहा QR कोड, आप इस पे जाके स्कैन करके जो भी अमाउंट से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो हमारी चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लेके भी आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बंगाल फॉर बिगिनर्स। Should we watch something else before actually starting to work? Yeah, let's watch something else. Let's watch another Sarthak video. No, maybe not. Maybe not. Maybe let's do something productive. Should we? Okay, fuck it. Bye for today. I would be doing it like 3 hours from now. Bye. Chalo. Good night.